Gaurav Seth, and pleasure to welcome you along with Shivendra Chaturvedi for this exciting tie. And Shivendra, it's really poised very excitingly. बिल्कुल गौरव, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और यकीनन डेविस कप के जो भी मुकाबले होते हैं, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर ओकेजन्स को छोड़ करके कि अ, एक तरफ़ा सा मैच हो और भले ही खिलाड़ियों की या टीम की रैंकिंग या रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन डेविस कप में जब खेलने की बात होती है, तो देश के लिए खेलने का मामला आ जाता है और वहाँ पर खिलाड़ी सुपरलेटिव परफॉर्मेंस देने से नहीं चूकते। डेनमार्क की टीम के लिए लेकिन इस बार ख़ास बात ये है कि उनकी टीम में एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एटीपी रैंकिंग में 9वें पायदान पर मौजूद हैं और उन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था, अक्टूबर-नवंबर में पेरिस मास्टर्स जीता था। उनके आने से डेनमार्क की टीम की जो ताकत है वो ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन अच्छी बात है कि भारत इस समय पहले दिन के खेल के बाद 1-1 की बराबरी पर है। Yes, absolutely. Very well poised the tie. And just a quick recap of the matches yesterday. Yuki Bhamri lost his opening tie for India against Rune Holger. He's the 19-year-old world number 9 as the Indian team being introduced. Rohit Rajpal, the captain. A good smattering of Indian spectators here in Hillerød in Denmark, this lovely indoor hard court stadium. The Danish team introductions. Here is Rune Holger, who's the favorite from Denmark. But Shivendra, Davis Cup brings different pressure, and as they say, world rankings don't matter much. It's the pressure of playing for your country, doing your best. And who other than our very own Leander Paes? He's beaten so many players ranked much higher than himself when it comes to the Davis Cup. As the stage is set, this is the new format of the Davis Cup, of course. The two singles yesterday. Today, the first match will be the doubles, featuring Rohan Bopanna, the old warhorse, still going very strong for India. We just saw him coming out of the finals in the mixed doubles with Sania in Australia. And partnering Rohan will be Yuki Bhamri. And for Denmark, an interesting change, last-minute change in the team, which is showing how important this match is in the outcome of this tie. They've introduced Rune Holger, who was not supposed to be playing the doubles tie, and Nielsen, the captain, deciding that they have to put their best foot forward in this doubles. So Holger will be partnering Johannes Ingildsson in this doubles. The doubles tie will be followed by the first reverse singles, which will feature Sumit Nagal against Rune Holger. And then the fifth, and could be the deciding tie, will be Yuki Bhamri against August Holmgren. All the matches, of course, now the best of 3 sets, as opposed to the good old best of 5 sets we used to see in the earlier Davis Cups. So quicker, sharper tennis. As a packed stadium here, lovely indoor stadium. The Royal Stage, Hillerød, Denmark. Hard court, indoor. Temperatures freezing outside, -1 degrees, but nice and comfortable inside this beautiful stadium. Conditions perfect for tennis. Of course, hard court not a preferred surface, Shivendra, for India. We still favor grass. Let's see the profiles of the players. Ingildsson made his debut in 2019, and his doubles win-loss record 2-0 for Denmark, 25-year-old. And there's Rune Holger, more famous for his singles, of course. 19-year-old
doubles ranking of 196, and that's just because he doesn't play much doubles, but not a mean doubles player. 2018, his debut for Denmark in the Davis Cup. And he's got a good win-loss record, 5-1 in singles. Rohit Rajpal, the Indian captain, a lot of experience, and I'm sure he'll be giving useful tips to the Indian players at the changeovers. Yuki Bhambri. He's from New Delhi, 30 years old, a ranking of 90 in doubles. Made his debut for India in 2009. 12 Davis Cup ties played, and he hasn't played a doubles tie yet for India. A singles record of 0-1. And Rohan Bopanna. He's really been a stellar performer for so many years now. Now 42 years old, but still sharp as ever. World doubles ranking has dropped to 17. Debut 20 years back, 2002. And what an impressive record he has. So India will be hoping for Rohan and Yuki to combine very well. They don't normally partner each other, so that's a big question mark. But under Rohan's experience in doubles, he is the highest ranked doubles player in this match. Hopefully we can pull this through. It'll be a huge, huge advantage if India can win this doubles tie and then go into the reverse singles. इनफैक्ट ये भी एक शायद एक दिलचस्प आंकड़ा हो सकता है कि 42 साल की उम्र में आपकी जो डबल्स रैंकिंग है वो 17वें पायदान पर है और आप अभी भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स डबल्स फाइनल खेल के आ रहे हैं। तो रोहन बोपन्ना की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन यहाँ पर जो 4 खिलाड़ी मौजूद हैं कोर्ट पर, उनमें से हम देखें तो 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिंगल्स की ही जिनकी वरीयता है, जिनकी प्राथमिकता है, और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो डबल्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे हम रून होल्कर की बात करें, चाहे यूकी भांबरी की बात करें, और बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना से कंपेयर करें तो वो काफ़ी अपेक्षाकृत युवा हैं, कम अनुभव है, लेकिन यही शायद एक मिक्स है जो डेविस कप मुकाबलों को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। और अगर हम वरीयता की बात करें थे कुछ देर पहले, तो उसमें भारत की जो डेविस कप में जो रैंकिंग है वो संयोग की बात है कि 26वें पायदान पर है भारत और डेनमार्क 45वें पायदान पर है, तो काफ़ी फासला है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि डेविस कप के मुकाबले वरीयता को अक्सर झुठलाते आए हैं और भारत से बेहतर इस चीज़ को कौन समझ सकता है। भारत 3 बार डेविस कप के फाइनल में पहुंचा है और मुश्किल से 1 या 2 खिलाड़ी रहे हैं, चाहे वो रामनाथन कृष्णन रहे हो, चाहे वो रमेश कृष्णन रहे हो, विजय अमृतराज रहे हो या फिर लिएंडर पेस रहे हो, जो सिंगल्स में दरअसल अपनी ड्यूटी निभाते हुए नजर आते थे। लेकिन यहाँ पर जब डेविस कप के फॉर्मेट की बात आती है, देश के लिए खेलने की बात आती है, तो एक से बढ़कर एक यादगार मुकाबलों के हम साक्षी बने हैं, चाहे देश में हो या विदेश में। और भारतीय टीम के लिए अच्छी बात यह है कि कल पहला सिंगल्स हारे और उसके बाद सुमित नागल ने वापसी दिलाई, तो रोहन बोपन्ना और यूकी भांबरी के पास मौका है कि उनका जो एक पेयर बना है उसकी सार्थकता को साबित करें। इंडोर जो हार्ड कोर्ट हैं वो यकीनन भारतीय टीम के लिए उनका फेवरेट सरफेस नहीं है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की बात आती है तो तमाम तरीके की परिस्थितियां हैं जिनमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है और कंट्री के लिए खेलना है, परफॉर्म करना है, तो इससे बढ़कर कोई ऑनर है ही नहीं। और उम्मीद यही है कि भारतीय दोनों खिलाड़ी आज अपना बेहतरीन खेल दिखाएंगे। डेनमार्क की बात की जाए तो एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत ने थॉमस कप मुकाबला फाइनल खेला था और भारत उसमें जीता था। फुटबॉल के लिए भी डेनमार्क बहुत पॉपुलर है, लेकिन हाँ, टेनिस में भी धीरे धीरे उनका जो रुझान है और ख़ासतौर पर जैसे ही खिलाड़ी आते हैं और वो अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाते हैं तो लोकप्रियता बढ़ती है। फिलहाल मुकाबला शुरू होने के क्रम में। Great pass. Rune. That's a super start from Denmark.
Good first serve from Rohan, came into the net, but Rune rising to the task. That's just wide from Yuki at the net, and early pressure on India. Love 30. Boom, boom, Bopana. Can he produce those booming serves today? Yes, good first serve from Rohan. Cut down the speed on that one. Made sure it landed into that service box. Nice deep return from Rune. And straight away, 2 break points for Denmark in the very first game. A lot of pressure here on Rohan. Early break of serve in the very first game for Denmark. Cheered on by a packed indoor stadium here. And Denmark seizing the initiative right from the word go. So that's a big blow for India right at the start of this game. The Danes realize how crucial this match is. And let's hope India can get that break back soon. उम्मीद के विपरीत शुरुआत होती हुई भारतीय टीम के लिहाज से रोहन बोपन्ना की सर्विस ब्रेक हुई पहले ही सर्विस गेम में, पहले सेट के। बैकहैंड रिटर्न इस बार बोपन्ना का वो भी प्लेइंग एरेना से काफ़ी दूर जाता हुआ। तो दूसरे सर्विस गेम में भी अंक बनाने का सिलसिला डेनमार्क की ओर से शुरू। रून होल्गर और इनगिल्डसन, ये है रून होल्गर आपके स्क्रीन पर। एटीपी रैंकिंग में 9वें स्थान पर काबिज हैं फिलहाल। नेट पर मौजूद थे बोपन्ना, लेकिन बमुश्किल तमाम अपना रैकेट लड़ाया, काफ़ी पीछे बेस लाइन से। तो 1-0 की बढ़त है डेनमार्क के पास। एक ब्रेक उन्होंने हासिल किया है, बोपन्ना की सर्विस ब्रेक हुई है। और ये हिरेटिक शॉट ओवर एक्साइटमेंट में, कई बार टेनिस में, कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब किसी खिलाड़ी को लगता है कि बस ये पॉइंट तो उसका है और वही पॉइंट हाथ से फिसल जाता है। इस बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फोरहैंड रिटर्न था, अप्रोच किया था नेट पर किल करने के लिए, लेकिन एक अनफोर्स्ड एरर रोन के पार्ट पर कही जा सकती है। परिस्थितियां डेनमार्क के पक्ष में फिलहाल 2 गेम पॉइंट इस दूसरे सर्विस गेम में। यूकी भांबरी मूलतः सिंगल्स के ही खिलाड़ी हैं। एटीपी रैंकिंग में टॉप 100 में पहुंचे। शुरुआत की थी तो बहुत प्रॉमिस के साथ उनका आगाज हुआ था सर्किट पर। अभी भी 2 गेम पॉइंट डेनमार्क के पक्ष में। बहुत ही बढ़िया रिटर्न था। रोहन बोपन्ना अपनी ओर से प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन कई मर्तबा जो पूर्वानुमान है, जो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो मन के मुताबिक रूप नहीं लेता। बैकहैंड रिटर्न लेकिन साइड गैलरी से बाहर। तो अपनी सर्विस होल्ड की है रून होल्गर ने और 2-0 की बढ़त डेनमार्क को दिला दी है। एक ब्रेक उनके पास है। अब यूकी भांबरी सर्विस करने के लिए आएंगे। रफ्तार वो नहीं दिखी रोहन बोपन्ना की सर्विस में। देखना होगा कि यूकी क्या कर दिखाते हैं।
Great overhead there from Rune. Getting nicely under the ball, showing his class. That lob from Yuki just not deep enough and gets the treatment it deserved. Pressure once again on India. Been a great start for Denmark in this crucial doubles rubber. Still 2 break points to go. Yuki Bhambre under pressure. The unforced error coming from Rune. Cross court on the backhand. Two break points saved, one more to go. There's the break. Second consecutive break for Denmark as they jump onto a 3-0 lead in this first set of this doubles rubber. Remember, it's one match apiece, and this is the third rubber, the doubles, and Denmark off to a flyer. Both the Indians have struggled on their serves. So important to get off to a good start. Does wonders to your confidence, and both Rohan and Yuki will be wondering on what's happened. It's almost like they've come out slow off the blocks, as if they're not properly warmed up. It is very cold, of course, -1 degrees, but that's outside. Inside, the ambient temperature, very, very comfortable. But they've just been very slow off the blocks today. अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं जो भारतीय खिलाड़ियों के पक्ष में जाता दिख रहा हो। 2 सर्विस ब्रेक और दोनों ही डेनमार्क के पक्ष में। पहले रोहन बोपन्ना पहले सर्विस गेम में, उसके बाद तीसरे सर्विस गेम में यूकी भांबरी और रुन होलगर ने अपनी सर्विस होल्ड की, तो 3-0 की बढ़त पहले सेट में डेनमार्क को, और ये कमांडिंग लीड है। ये एक अच्छी मनोबल बढ़ाने वाली बढ़त है और बहुत ही महत्वपूर्ण डबल्स मुकाबला है, क्योंकि दोनों देश 1-1 की बराबरी पर हैं। पहला सिंगल्स हारे यूकी भांबरी, सुमित नागल ने दूसरा सिंगल्स जीता, भारत को 1-1 की बराबरी दिलाई। डेविस कप के मुकाबले पहले 3 दिन तक खेले जाते थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और ख़ास तौर पर शनिवार के दिन केवल डबल्स का मुकाबला होता था। तीसरे दिन दोनों रिवर्स सिंगल्स खेले जाते थे। इस बार नेट पर अच्छा काम किया यूकी ने, मौका मिला उनको, और ऐसे ही कुछ रिफ्लेक्सेस दिखाने होंगे। हालांकि रिटर्न भी थोड़ा कमज़ोर आया था भारत के पक्ष में अंक बनता हुआ। हम बात कर रहे थे डेविस कप के फॉर्मेट की। 2019 से फॉर्मेट में बदलाव हुआ और अब 2 दिन में ही मुकाबलों का समापन होता है।
इंडोर हार्ड कोर्ट्स पर भी आज की तारीख में काफ़ी मैचेस खेले जाते हैं और इंटरनेशनल मुकाबले जब खिलाड़ी खेलने के लिए देश के बाहर निकलते हैं तो हर तरीके की जो परिस्थितियां हैं उनसे दो चार होना पड़ता है। इनसाइड आउट एरेटिक रिटर्न एक यूकी भामरी का साइड गैलरी से बाहर। 3-0 की बढ़त डेनमार्क को, 15-15 की बराबरी चौथे सर्विस गेम में। पहली मर्तबा यहाँ पर इस टाई में सर्विस कर रहे हैं, इस मैच में सर्विस कर रहे हैं योहानेस एंगेल्सन, 25 वर्षीय डेनमार्क के खिलाड़ी। एक तरफ उनसे भी छोटे रून होल्गर हैं जिन्होंने एटीपी सर्किट पर धूम मचाई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पिछले एक साल में। और उनका जो वरीयता का ग्राफ है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उनकी टीम में मौजूदगी ही डेनमार्क की टीम के जो उत्साह है उसको बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। एंगेल्सन सामने अनुभवी रोहन बोपन्ना, बढ़िया रिटर्न रोहन का। फोरहैंड से ही जवाब देना चाहते थे एंगेल्सन, लेकिन इस बार चूके। तो दबाव बनाना बहुत जरूरी डेनमार्क के खिलाड़ियों के ऊपर और शायद रून और एंगेल्सन में से मुफीद होंगे दबाव बनाने के लिए खिलाड़ी तो एंगेल्सन ही होंगे। लगातार 2 पॉइंट भारत के पक्ष में। दर्शक अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं इंडोर एरिना में और हर शॉट का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। अच्छा पूर्वानुमान, अच्छा जजमेंट रोहन बोपन्ना का, बढ़िया सर्विस है इस बार और कोई गलती नहीं। रून होल्गर एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है। आप देखेंगे रिएक्शन रिप्ले में किस तरीके से उन्होंने शॉट खेला। पिछली बार ऐसे ही शॉट को बाहर मार बैठे थे, अब की बार कोई गलती नहीं। नेट पर मौजूद है रून होल्गर, बढ़िया उनके द्वारा इंटरसेप्शन और परिणाम स्वरूप जो एक गेम पॉइंट था डेनमार्क के पक्ष में उसे अपने खाते में डाला और इसके साथ ही 4-0 की बढ़त। तो ये बहुत ही कमांडिंग लीड है। 2 सर्विस ब्रेक के साथ पहले सेट में 4-0 की बढ़त और इससे वापसी तो बड़ी मुश्किल लगती है। Yes, very tough to come back in this opening set. It'll take almost a miracle to come back in this first set after being 2 breaks down. Much better from Rohan in this service game. Getting his 3 first serves in makes such a difference. Almost makes it easy once you get a high percentage of those first serves. And an ace to wrap it up. Much better game from Rohan. That'll certainly boost their confidence. It's Captain Rohit Rajpal. I wonder what he's telling them, but he's saying try to fight, try to come back in this set. It ain't over till it's over. So they have to play now all out, nothing to lose, and try to put the pressure back on Denmark. Lovely service action from this veteran. Still sharp as ever, Rohan Bopanna. And that ace was just too good for Rune. Acknowledges that great serve. Good to see Indian supporters here in Denmark. Good enthusiasm and
It was great to see India come back in the second singles yesterday and make this tie completely wide open and very exciting. Let's see if India can get a break here. They're running out of time in this set. So it's almost a must break situation in this service game. तो रोहन बोपन्ना की सर्विस पहले सर्विस गेम में ब्रेक हुई, लेकिन पिछली मर्तबा उन्होंने अपनी सर्विस बरकरार रखी और बड़े शानदार अंदाज में वो गेम जीता। उम्मीद यही है कि बड़ा मोरल बूस्टर साबित होगा ये जो सर्विस गेम जीता भारतीय टीम ने, क्योंकि 0-4 से पिछड़ने के बाद कम से कम स्कोर बोर्ड पर एक गेम तो आपके पक्ष में आया है। अभी 4-1 की बढ़त है डेनमार्क के पास और सर्विस रोन होलगर के खाते में है। तो उनका प्रयास होगा कि जिस अंदाज में 2 पॉइंट मिले हैं, इन विल्सन ने दोनों पॉइंट नेट पर इंटरसेप्ट करके डेनमार्क को दिलाए हैं। कुछ चमत्कारी रिटर्न, कुछ जोरदार रिटर्न करने होंगे दोनों भारतीय खिलाड़ियों को। कई मरतबा टेनिस के खेल में खासियत यही है कि आप जब तक पलक झपकाते हैं तब तक गेम खत्म हो जाता है। पिछले सर्विस गेम में कुछ ऐसा ही हुआ था। कई मरतबा इतनी लंबी रैलीज चलती हैं, बेसलाइन पर आजकल खिलाड़ी पावर हिटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सहारा लेते हैं। And Shivendra, Rune is not a natural volleyer, and we see that again. The errors coming on those volleys. He's a baseliner, he plays singles, and this aspect of the game is a struggle for him. बिल्कुल, हमने पहले भी इस ओर इशारा किया था कि अभी तक 3 बार ऐसा हुआ है और 2 बार उनसे गलती हुई। एक मर्तबा बहुत ही आसान जब वॉली थी, उन्होंने लकी थे ये कहेंगे कि उन्होंने नेट पर सर्विस एरिना में रखा, प्लेइंग एरिना में रखा बॉल को, अन्यथा ऐसा लगा था कि शायद वो भी बाहर गई और यहाँ आसानी के साथ गेम जीतने में कामयाबी। सर्विस गेम 5-1 की बढ़त, 5-1 की बढ़त डेनमार्क के कोच फ्रेडरिक नील्सन। परिस्थितियां डेनमार्क के पक्ष में, जाहिर तौर पर प्रसन्न होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से। चैलेंज है कि भारतीय टीम के लिए और बड़ा कठिन चैलेंज। So serving to stay alive in this opening set, Yuki Bhambre. Lovely angle on that serve from Yuki, going out wide to Rune Holga. 30 love. Remember, Yuki was broken in his previous service game, so will be a big boost for him to hold this serve. Oh, great rally. But it's the Danes who are dominating the net, and that's what helps them prevail. Good quick fire rally. Sharp exchange. And finally that winning volley coming from Ingelsson. The volley error this time coming from Ingelsson gets India 2 game points, 40-15.
danske servegennembrud. Og det betyder altså, at Johannes Ingelsen om et kort øjeblik kan jo kunne So serve India doing med well bolde. to hold serve there, Yuki Bhambre. Det her første sæt. But it's still Denmark very much with the advantage in this opening set. And when they come back from this break, they will be serving for the opening set. Up 2 breaks of serve. So as far as the opening set is concerned, it's now or never for India. They have to break to try to come back in this set. Men jeg ved også, da jeg talte med ham, altså han er ved at indgå nogle gode aftaler med forskellige spillere, så Please take your seat. Thank you. So Ingelsson now serving for the opening set at 5-2. बढ़िया शुरुआत 8वें सर्विस गेम की इंगेल्सन के द्वारा डेनमार्क के लिए। अच्छी बात ये रही भारतीय दृष्टिकोण से कि रोहन बोपन्ना और यूकी भांबरी दोनों की पहली सर्विस ब्रेक हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस बरकरार रखी। बीच में कुछ अच्छी रैलीज भी हुई, एक बहुत ही दर्शनीय रैली थी जिसका एक्शन रिप्ले कुछ देर पहले हमने देखा। लेकिन फिलहाल परिस्थितियां ओवरऑल तो डेनमार्क के पक्ष में ही है। 5-2 की बढ़त है, 30 लव स्कोर है इस सर्विस गेम में। इंगेल्सन युवा खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है उनके पास, लेकिन अच्छा प्रॉमिस दिखाया उन्होंने। इस मर्तबा पुश किया था फोरहैंड से, लेकिन असफल रहे। बढ़िया खेल का प्रदर्शन डेनमार्क के खिलाड़ियों के द्वारा। हालांकि यूकी ने अच्छी वापसी की थी, लेकिन अब 2 सेट पॉइंट, 2 गेम पॉइंट और 2 सेट पॉइंट डेनमार्क के पक्ष में इस पहले सेट में। डेविस कप ग्रुप 1 प्लेऑफ टाई है ये, जो कि डेनमार्क में खेली जा रही है। भारत और डेनमार्क की डेविस कप टीमों के दरमियान। भारत ग्रुप 2 में कभी भी नहीं पहुंचा, तो अगर ये टाई भारत हारता है तो काफी निराशाजनक बात होगी। बहुत ही बढ़िया वापसी की थी यूकी ने, लेकिन फोरहैंड क्या उनका लाइन पर है? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड, अच्छा रिफ्लेक्सेस। रिटर्न गया जरूर था, रून ने दिशा बदली थी और अपनी पोजीशन बढ़िया तरीके से चेंज करके फोरहैंड का सहारा लिया। इंगेल्सन को भी लगा कि शायद ये बेस लाइन से पीछे गिर रही है, तो उन्होंने उसको जाने दिया। लेकिन एक सेट पॉइंट अभी भी रून नेट पर मौजूद हैं, एक बार नहीं तो दूसरी बार सही। और आप देखें दर्शकों का उत्साह, रून ओल्गर एंजॉय करते हुए कमान कमान अपने टीम के खिलाड़ियों को बकअप करते हुए। ये आखिरी पॉइंट इस सेट का, डबल हैंडेड बैकहैंड नेट पर रून ओल्गर का क्रॉस कोर्ट। पहली बार जरूर रिटर्न मिला था, लेकिन दूसरी बार कोई स्कोप नहीं उसका। और 6-2 से ये पहला सेट जीतने में कामयाबी 25 मिनट के खेल में। इंगेल्सन और रून ओल्गर 2 सर्विस ब्रेक हासिल हुए, परिणाम स्वरूप 6-2 की बढ़त। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये डबल्स मुकाबला। भारत की टीम में प्रजनेश गुन्नेश्वरन शामिल हैं, यूकी भांबरी शामिल हैं, भारत के कोच हैं जीशान अली। जीशान 1987 में भारत जब फाइनल में पहुंचा था डेविस कप में, उस वक्त भारतीय टीम के साथ हुआ करते थे, टीम के सदस्य थे। इस समय प्रशिक्षक के तौर पर
दायित्व निभा रहे हैं। तो विश्व वरीयता क्रम, जैसे हमने कई बार कहा कि बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता डेविस कप के मुकाबले में, लेकिन रूड होल्कर इन चारों खिलाड़ियों में सबसे अलग नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो परफॉर्मेंस है, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है इनका। रोहन बोपन्ना ने भी अपना क्लास एक जो पर्टिकुलर सर्विस गेम में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया था। ये पहले सेट की कहानी है आपके लिए। पहली सर्विस का जो परसेंटेज है इवन स्टीवेंस कहा जा सकता है, लेकिन अंक ज़्यादा बटोरे डेनमार्क के खिलाड़ियों ने, भारतीय खिलाड़ी उसमें पीछे रहे। Start of set number 2. That vacant area, and really should have been an easy put away there for Rohan. Just seemed to be a little complacent. First Yuki, nice get there, and had left it completely open, Rohan. Remember, this is the best of 3 sets. So it's a must win for India to stay alive in this doubles rubber. Good return from Rune. Low over the net and made life very difficult for Yuki with that volley. And once again, straight away pressure in the very first game of the second set. Much better serve down the middle. That's the Rohan we are used to seeing. That's long, good baseline rally. And Rohan very consistent. They were keeping the ball down the line. They were quite aware of the opponents waiting at the net. $30-all. Down the line, a super shot from Rune Holger. And once again, it's a break point for Denmark. Nothing wrong with that cross court, but the down the line was even better. There's the break. Super return of serve. Nice and deep, almost onto the feet of Rohan. And in the very first game of the second set, Denmark get a break and they lead 1-0, having won the first set 6-2. So it's been Denmark all the way so far, in just under half an hour in this doubles rubber. Davis Cup World Group 1 playoffs, India versus Denmark. It's 1 rubber apiece, but it's Denmark ahead in this doubles. Sit down, please. Behind the players. Thank you. तो दूसरे सेट की शुरुआत भी इसी अंदाज में जैसे पहले सेट की शुरुआत हुई थी। रोहन बोपन्ना की सर्विस ब्रेक हुई थी, उसके बाद डेनमार्क ने अपना
सर्विस गेम बरकरार रखा था रून होलगर ने। आड़े तिरछे अंदाज में इस बार इंगल्सन का रिटर्न आया और मुस्तैद थे यूकी भांबरी। फायदा उठाते हुए मौके का उन्होंने अंक भारत के लिए अर्जित किया। देखें किस तरीके से अपने आप को पोजीशन किया, बमुश्किल तमाम रिटर्न, और यूकी भांबरी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ शॉट खेला उन्होंने। तो हम बात कर रहे थे पहले और दूसरे सेट की सिमिलैरिटी की। रोहन बोपन्ना की सर्विस ब्रेक हुई, उसके बाद तीसरे सर्विस गेम में यूकी भांबरी की सर्विस ब्रेक हुई और वो जो बढ़त हासिल की डेनमार्क ने, इसका फायदा उनको मिला पहले सेट में। बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर खेले जाने वाले ये मुकाबले हैं। डेविस कप भी जो खेलों में परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो तकनीक के समावेश की बात हो या प्रारूप में परिवर्तन की बात, फॉर्मेट में चेंज की बात, उसका अपवाद नहीं है। और खेल को और ज़्यादा आकर्षक, रोचक और तेज बनाने की कोशिशें हैं, जिसके तहत बेस्ट ऑफ 3 सेट्स के आधार पर फैसला होने का निर्णय है, लागू किया गया है। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि बहुत ज़्यादा, अगर आप पहले कई मरतबा देखने को मिलता था कि खिलाड़ी 2 सेट से पिछड़ रहे हैं, 0-2 से पिछड़ रहे हैं, उसके बाद वापसी कर रहे हैं, तो 3.5-4 घंटे तक मैचेस चल रहे हैं। शायद अब वो एक बहुत इतिहास की बात होगी। बहुत ही इस बार वेवर्ड रिटर्न, हालांकि सर्विस सही नहीं थी। रून होलगर की बहुत ही चमकदार पर्सनैलिटी है। एक बार फिर से पहली सर्विस का परसेंटेज भी उतना अच्छा नहीं आ रहा और सेकंड सर्व भी इतनी इम्प्रेसिव नहीं थी। सर्विस बॉक्स से काफी पीछे गिरी। डबल फॉल्ट और भारत के पक्ष में अब अवसर बाउंस बैक करने का। और डेनिश कोच जो है, चिंता की रेखाएं बहुत स्पष्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती हैं उनके चेहरे पर, नाराज से दिख रहे हैं। फ्लैम्बॉयंस जैसे हम अक्सर बोलते हैं टेनिस में, ख़ास तौर पर ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। रून होलगर के खेल की भी एक खासियत है, क्वालिटी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत ही शानदार रिटर्न बैकहैंड, और इसके साथ ही भारत को जो चाहिए था वो मिल चुका है, यानी एक सर्विस ब्रेक भारत के पक्ष में। रोहन बोपन्ना ने पहले अपनी सर्विस बरकरार रखी, उसके बाद उन्होंने शानदार रिटर्न किया पिछले पॉइंट पर और रून होलकर की सर्विस ब्रेक हुई। तो क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है भारत के पक्ष में? कहना अभी मुश्किल, लेकिन हाँ उम्मीद की जा सकती है। और अब अवसर है यूकी भांबरी के पास कि ये जो बढ़त हासिल हुई है उसको बिल्डअप किया जाए, उसको बरकरार रखा जाए। अच्छी सर्विस, पहली डीप सर्विस, रिटर्न नेट में उलझता हुआ इंगल्सन का अंक भारत के पक्ष में। 6-2 से पहला सेट जीते डेनमार्क, दूसरे सेट में 1-1 की बराबरी। ब्रेक्स एक्सचेंज हुए हैं, इस बार बढ़िया मौका था। रोहन बोपन्ना नेट पर मौजूद थे, हालांकि उनका पहली बार जो रिटर्न आया था वो भी बड़ा दर्शनीय आया था, लेकिन उसका उतना ही शानदार जवाब दिया गया रून होलकर के द्वारा। प्लेइंग एरिना से काफी दूर गए थे। देखिए रिएक्शन रिप्ले में, दौड़ करके रिटर्न किया, नेट पर मौजूद थे रोहन लेकिन चूके। इंगल्सन आपके स्क्रीन पर। रून होलकर नेट पर गलतियां कम ही करते हैं। वॉली अगर आ जाए तो बात अलग है, क्योंकि वो उनका फोर्टे नहीं है। रोहन बोपन्ना 42 साल के हैं और डेनमार्क के दोनों खिलाड़ियों की उम्र मिला लें तो भी उनसे कम। वेवर्ड रिटर्न, बेस लाइन से काफी पीछे चले गए थे रून होलकर, कंट्रोल नहीं कर पाए शॉट पर। ओवरऑल इस सेट में भारतीय खिलाड़ी ज्यादा
कंपोज दिख रहे हैं और गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, अनफोर्स्ड एरर ज़्यादा हो रही हैं, ख़ासतौर पर रून होल्गर से। इसका फ़ायदा मिलेगा यकीनन भारतीय टीम को। दूसरे सेट में 1-1 30-all, यानी मुकाबला इवन स्टीवंस बराबरी का। डेनमार्क एक ऐसा देश है जो कि विश्व वरीयता क्रम में, डेविस कप में या विश्व वरीयता क्रम जो रैंकिंग है उसमें 45वें पायदान पर है। भारत 26वें स्थान पर है। एक गेम पॉइंट भारत के पक्ष में आ सकता था, लेकिन डेनमार्क की ओर से ज्यादा बेहतर खेल का प्रदर्शन। एक बार फिर से गलती हुई रोहन बोपन्ना से नेट पर, और ये बड़ा अनलकी कहा जा सकता है इस सर्विस गेम में। खासतौर पे हमने गौरव 2 मरतबा देखा कि रोहन बिल्कुल नेट पर मौजूद थे, अच्छा अवसर था उनके पास, लेकिन चूक गए वो। Indeed, a series of 3 consecutive breaks of serve, which is quite rare to see in doubles, Shivendra. And you often get just that one break, if at all, in a set. And here we've seen 3 breaks in the very first 3 games. 6 break points for the Danes against only 1 for India. But once again, it's Denmark who've got their noses ahead now. 1 set up, winning the first set 6-2, and up a break of serve and 2-1 in the second. Remember, this is a best of 3 set encounter. Rules changed in the Davis Cup in 2019 to make, like every sport, the format quicker, faster, and more entertaining for spectators. So it's been reduced to 2 days. Yesterday was day 1, where we saw the 2 opening singles and honors shared with Denmark and India. So it's 1 tie apiece, 1 rubber apiece. And this doubles will be followed by the 2 reverse singles all today. The winner of this tie will stay in the World Group 1, and the loser will be relegated to World Group 2. Johannes Ingelsson of Denmark serving. Great put away at the net. This time, no mistakes from Rune Holger. He's been struggling with his volleys, but this time, no mistakes. Almost getting a second reflex volley in. He sees the funny side of it, Rune Holger. First reflex volley. And then the net cord, actually. He was all set for the second one. Net cord intervening. Once again, great anticipation at the net from Rune Holger. Indian captain Rohit Rajpal looking on. 2 game points for Denmark to consolidate their position in this second set. And an ace to wrap it up from Ingelsson. So growing from strength to strength, Denmark.
And it'll require a Herculean effort now from the Indian pair to come back in this second set and in this match. Having lost the first set 2-6, down 1-3 in the second set. Rohan serving. Almost casual there with that backhand flick. Rune Holger. Good serve from Rohan, good first serve. They've got a mountain to climb in this match, Rohan and Yuki. Short, sharp rallies. Easy hold of serve from Rohan Bopanna. But the Indians still down a break of serve. Down 2-3 in the second set, having lost the first set 2-6. Danish captain Nielsen must be quite happy with the way things are going in this opening match on day 2. Rohan Bopanna, 42-year-old, but still sharp as ever. Pretty close on that stat there. First serve percentage almost similar, but a much higher percentage of first serves won by the Danes. Ram Kumar Ramkrishnan in the background. It's a lovely venue, the Royal Stage in Hillerød, Denmark. Hard court, indoor surface. Freezing outside, it's -1 degrees. But very comfortable and great conditions for tennis inside this lovely hall. Close call there at the line. Seem to be right on the line. Not happy, the Danish players. The chair umpire's call will be final. Very close call, but looked to be right on the line. So good call by the chair umpire. There is no provision for Hawkeye in this particular tie. So the chair umpire's verdict is final. Yes, great placement there from Yuki Bhamri. He saw that opening. Lovely down the line, which is too good for Rune.
constant communication, so critical in doubles. Yuki sharp at the net, showing his reflexes. Yuki is retired from playing singles in the ATP Tour, but doing service for India here in the Davis Cup in the singles as well. Good return of serve from Yuki, gets India 2 break points. Big opportunity to break back and draw level in this second set. Superb string of points from Yuki in this game. One break point saved thanks to that good first serve from Rune Holger. Oh, that's long, going for a bit too much on that return. And 2 break points saved by Denmark. This could well be the turning point in this match. Big opportunity lost for India, but it's not over yet. It's deuce. And once again, the unforced error coming from Rohan this time. So 3 points in a row for the Danes. They've almost got out of jail here. Pendulum has swung, and it's advantage Denmark. Ace down the middle from Rune Holger. Doing well to save 2 break points in that game. And hold serve and keep the advantage with Denmark as they lead 4-2 in this second set, having won the first set 6-2. Can you please take your seats quickly, players are ready? Take your seats. Thank you. तो पहला सेट डेनमार्क के खाते में 6-2 से, दूसरे सेट में 4-2 की बढ़त। हालांकि 2-4 के स्कोर पर यूकी भामरे की सर्विस। यूकी इस समय अच्छे फ्रेम में नजर आ रहे हैं और पिछले 2-3 मौकों पर उन्होंने याद दिलाई है अपने उस बेहतरीन खेल की जिसके लिए वो विख्यात रहे हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा कि रैंकिंग कुछ भी हो, लेकिन यहाँ प्रदर्शन मायने रखता है डेविस कप के मुकाबलों में। बहुत ही बढ़िया बैकहैंड रिटर्न था रून होल्गर का। रोहन बोपन्ना हालांकि नेट पर मौजूद थे, लेकिन रिटर्न अपेक्षित नहीं, उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ पाया। परिणाम स्वरूप डेनमार्क के खाते में अंक। ये सर्विस गेम बहुत ही महत्वपूर्ण है सेट में बने रहने के लिए। अच्छा एक्सचेंज, और आप देखें दोनों डेनिश खिलाड़ी नेट पर आ गए थे और ये एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी इन खिलाड़ियों की रही है। बेस लाइन से 2 बार 3 बार रिटर्न और उसके बाद नेट पर अप्रोच किया इनगिल्सन ने भी और दूसरी ओर से रून होल्गर ने भी। तो अगर रिटर्न आता भी तो भी शायद दोनों खिलाड़ी नेट पर मौजूद थे चिप एंड चार्ज करने के लिए। बहुत ही बढ़िया सर्विस थी इस बार।
एम्पायर के जो फैसले हैं वो कई मर्तबा खिलाड़ियों के लिए खुशी का मौका बनते हैं तो कई बार गम का भी, और ख़ास तौर पर जहां हॉकाई नहीं हो, क्योंकि स्टेक्स काफ़ी हाई होते हैं। और यहाँ एक बार फिर से एम्पायर की मौजूदगी। And Shivendra, of course, this being a hard court, unlike the clay at Roland Garros, there is no telltale sign of where the ball fell as well. So the umpire's verdict has to be final. इनफैक्ट गौरव, फ्रेंच ओपन का आपने याद दिला दिया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आज के समय में, उसको भी देखना अपने आप में बड़ा दिलचस्प होता है। वो भी जैसे हम विंबलडन में परंपरा की बात करते हैं, तो वैसे ही फ्रेंच ओपन अपने आप में विशिष्ट है ही, और वहाँ पर भी जब पॉइंट्स को लेकर के कुछ बहस होती है तो वो दैट अगेन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। And talking about lines, Shivendra, you'll remember at Wimbledon in the good old days, the ball used to bring up some chalk of the line. And that was a telltale sign that if the ball was in or out. बैकहैंड नेट में जाता हुआ, और परिणाम स्वरूप भारत के पक्ष में ये सर्विस गेम। तो यूकी भांबरी अपनी सर्विस को होल्ड करते हुए, थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर है। देखिए, कोई भी पॉइंट इस मुकाबले में आसान नहीं है, भले ही स्कोर बोर्ड पर सेट का स्कोर कुछ भी अंकित हो, लेकिन चारों खिलाड़ी जो कोर्ट पर मौजूद हैं हर पॉइंट को 100% कमिटमेंट के साथ खेलते हैं। डबल एंडेड बैकहैंड रिटर्न, क्रॉस कोर्ट यूकी का डाउन द लाइन पास मारने की कोशिश। भारत के पक्ष में अच्छा खासा समर्थन है गौरव। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि आज की तारीख में आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, भारतीय प्रशंसक आपको हर जगह मिलेंगे, खेल के मैदान पर वो भी। इट्स अ वेरी हेल्दी साइन इन फैक्ट। And it's great for support for the Indian contingent there, because otherwise, of course, they are outnumbered in terms of the home crowd support. But lovely to have loud and vociferous bunch of Indians there with the tricolour, egging the Indians on in this crucial match. And it's not over yet. It's still only one break in it. They were very close in the last game to getting that back. But let's see if they can claw their way back here. डेविस कप मुकाबलों में हम सभी जानते हैं कि जो एक दर्शकों का समर्थन है, और उस पर भी अगर भारतीय खिलाड़ियों के लिहाज से बात करें, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं डेनमार्क में, एक इमोशनल सपोर्ट भी उनके साथ रहता है। यहाँ रून होलगर नेट पर तो गजब ढाते हैं वो, जैसे ही उनको मौका मिलता है। और कोई भी उनका शॉट देखने में आया है कि स्ट्रेटिश नहीं रहा है, वो बिल्कुल एंगुलर स्ट्रोक्स खेलते हैं, जिससे कोई विपक्षी खिलाड़ी के लिए अवसर ही न रहे। दिशाहीन सर्विस इस बार एंगल्सन की। 6-2, 4-3, 15-0 ये है अब तक की कहानी डेनमार्क और भारत के बीच डेविस कप टाई का दूसरा दिन, तीसरा मैच। एक बार फिर से रून होलगर डिसाइसिव फैक्टर साबित होते हुए नेट पर, न जाने कितनी बार उन्होंने नेट पर आज के इस मैच में ये करिश्मा करके दिखाया है। एक दो बार चूके भी हैं, कुछ अनफोर्स एरर्स भी हुई हैं, लेकिन कई बार जैसे हम बात करते हैं अंग्रेजी में पोटेंशियल बेनिफिट पॉसिबल हज़ार्ड, तो उसके लिहाज से रून होलगर अपनी टीम के लिए पोटेंशियल क्या, हर लिहाज से बड़ा फ़ायदेमंद सौदा साबित होते हुए। उन्नीस 1974, 1987 ये वो 2 वर्ष हैं, ये 3 वर्ष हैं जब भारत डेविस कप के फाइनल में पहुंचा। हालांकि खिताब जीतने में भारत अभी तक कामयाब नहीं हुआ, लेकिन रेपुटेशन भारत की डेविस कप टेनिस खेलने वाले खिलाड़ियों में हमेशा बड़ी ऊंची रही है। इस बार नेट पर आए थे बोपन्ना, लेकिन उनका बैकहैंड भी इस लाइन से पीछे। अच्छा पोजीशन किया था अपने आप को। तो अब 2 गेम पॉइंट हैं एक कमांडिंग बढ़त लेने के लिए डेनमार्क के पास। दूसरे सेट में भी, पहले सेट में ठीक से याद पड़ता है तो 5-2 की बढ़त थी उनके पास। एक सर्विस गेम, पिछली बार 2 ब्रेक हासिल किए थे डेनमार्क के खिलाड़ियों ने सेट में, इस मर्तबा फिलहाल एक ही।
साइड लाइन से बाहर। एक गेम पॉइंट बचाने में कामयाब भारतीय जोड़ी। स्कोर अभी भी 40-30, 40-30। थोड़ा क्रैम्ड अप हुए थे स्पेस के लिए एंगल्सन। डबल हैंडेड बैकहैंड रिटर्न था लेकिन साइड गैलरी से बाहर जाता हुआ। बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन, बेहतरीन लॉब खेला गया एंगल्सन के द्वारा। जैसे उन्होंने देखा कि दोनों भारतीय खिलाड़ी नेट के करीब हैं, पहले लॉब खेला, उस पर रिटर्न आया और वहां वॉली पर कोई गलती नहीं की। डेनिश खिलाड़ियों का जलवा बरकरार। गौरव, Yes, probably the rally of the match so far. It had everything in it. They were playing at the net, then that lovely lob, and a super finish from Rune. बिल्कुल जो यूथफुल जो उत्साह होता है एक युवा खिलाड़ी का अंक बनाने के बाद, अपनी मुट्ठियों को हवा में भींचना, हवा में लहराना, युवा जोश, उस सबका प्रदर्शन करते हुए रून होल्गर यहाँ पर 3-5 के स्कोर पर। अब सर्विस और यूकी बामरी नेट पर एजाइल, बढ़िया, उन्होंने लगभग झपटते हुए इंटरसेप्ट किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच में से बाइसेक्ट किया बॉल को। कोई मौका नहीं एंगल्सन और रून होल्गर के लिए, तो अच्छी शुरुआत। Super lob. Absolutely picture perfect from Rune Holger, showing that he doesn't just have the power game, but he also has the touch and the artistry. Look at that lob, the topspin lob. It couldn't be better. And right deep onto the court. Absolutely no chance for Rohan. That was just wide. Rohan had actually given up on it, but luckily the ball just missed the sideline. Two game points for India. Great return of serve. Taking the ball early. It was a good serve down the line, but great anticipation from the Danish player Ingridsen and dispatching it cross court for a winner. One more game point for India. It's a must hold here for Rohan to stay alive in this match. Nice first serve down the middle, and Rohan doing well to hold serve in that crucial game. India keep their hopes alive in this second set and in this match. But it's Denmark up with that crucial break of serve, and when they come back, they will be serving for the set and the match.
but much better fight in this second set, Shivendra. We saw 3 early breaks at the start of the set, and thereafter it's been pretty even Stevens, as you see the stats as well. जी हाँ, पहली सर्विस का जो परसेंटेज है वो भारत के पक्ष में बेहतर होता हुआ अगर उसको दूसरे पहले सेट से कंपेयर करेंगे तो, हालांकि अंक अभी भी पक्ष में डेनिश जोड़ी के। सेकेंड सर्व पर बेहतर प्रदर्शन, लगभग बराबरी, तो थोड़ी सी कमी रही, अन्यथा निश्चित तौर पर अभी परिस्थितियां भारतीय खिलाड़ी अपने पक्ष में कर सकते थे, करने में सक्षम है। तमाम मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि भारतीय खिलाड़ियों ने, इसे अंग्रेजी में कहते हैं टर्निंग द टेबल्स, वो करिश्मा करके दिखाया है, चमत्कार किए हैं डेविस कप में। यहाँ परिस्थितियाँ माकूल नहीं हैं, मुफीद नहीं हैं, लेकिन इंडोर हार्ड कोर्ट है और वरीयता में ऑफ कोर्स भारत आगे है डेनमार्क से। रून होल्गर एक डिसाइसिव फैक्टर हैं, निर्णायक फैक्टर हैं, लेकिन उनका जो फ्लैम्बॉयंस है गौरव, वो कई मरतबा ऐसा लगता है कि शायद कई बार उनके लिए डिसएडवांटेजियस सा हो जाता है। Interesting that he was a last-minute inclusion in this doubles. Captain Nielsen included him as per the rule 30 minutes before the match. Initially, the doubles lineup was going to be Ingelsson and Sixgaard, and Rune coming in place of Sixgaard. So taking a gamble, the Danish captain, even though the crucial singles are to follow. So one thought could have been to rest Rune and keep him fresh for that singles. दरअसल सुमित नागल ने जो अपना पहला एकल मैच जीता, उसने परिस्थितियों में थोड़ा सा, कैलकुलेशंस में थोड़ा सा बदलाव किया। इस बार बॉल का पहले इंगिल्सन ने पीछा किया था और उसके बाद बाकी का काम किया फोरहैंड पर रून होल्गर ने। जो बाईं तरफ का एरिना था कोर्ट का, वो बिल्कुल खाली था और उसका पूरा फायदा उठाया। खूबसूरत फोरहैंड स्ट्रोक खेल करके। आप देखें फ्रेम में कोई खिलाड़ी नजर नहीं आया क्योंकि नेट के करीब मौजूद थे यूकी भांबरी और इसको भांपा था रून होल्गर ने। कई बार उनकी सर्विस ने परेशान किया है उनको इस सर्विस गेम में। नेट पर अच्छा इंटरसेप्शन, इस बार कामयाब होते हुए इंगिल्सन। तालियों से इस अच्छे स्ट्रोक का अभिनंदन। और आप देखें 6-2, 5-4, 40-15 यानी 2 गेम पॉइंट, सेट पॉइंट और मैच पॉइंट बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर खेला जाने वाला ये टाई, तो निर्णायक मोड़ पर काफ़ी मुश्किलात नज़र आती हुई रून होल्गर को अपनी पहली सर्विस पर। 2 गेम, मैच, सेट पॉइंट और इसके साथ ही ये फैसला। लगता है कि डबल फॉल्ट ऐसे नाजुक मौके पर रून होल्गर काफ़ी निराश होंगे अपने आप से। हालांकि खिलाड़ी उनका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं खेल भावना के अनुरूप। ऐसे मौके पर खिलाड़ी को बैकअप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरी ताकत लगा करके डबल हैंडेड बैकहैंड स्ट्रोक खेला गया रून होल्गर के द्वारा और नेट पर दर्शक बने हुए थे इंगिल्सन और इसके साथ ही अंक मिला डेनमार्क को। यानी डेनमार्क ने ये टाई का, ये आज का जो पहला मुकाबला है, टाई का दूसरे दिन का पहला मैच, महत्वपूर्ण डबल्स मुकाबला, वो जीतने में कामयाबी हासिल की है। लगातार सेटों में, स्ट्रेट सेट्स में, दूसरे सेट में थोड़ा प्रतिरोध किया जरूर भारतीय जोड़ी ने और ये स्कोर लाइन पर, स्कोर बोर्ड पर स्कोर की पुष्टि 6-2, 6-4 से बढ़त। 25 मिनट पे पहला सेट, 38 मिनट पे दूसरा सेट और अब इस टाई में डेनमार्क को 2-1 की बढ़त हासिल हो चुकी है। Yes, it was too late for India. Just when they started to come back or try to fight back, it was too late.
And in that shortened version, the best of 3 sets, you have to really play your A game right from the word go, which the Indians didn't. Starter lige med et spørgsmål til Holger Rune. Dig og Joe spiller fantastisk dobbelt. Hvad er det, der fungerer så godt for jer? Det var rigtig fedt at spille med Joe. Jeg synes, vi havde rigtig god kemi. Vi spillede dejligt aggressivt. Vi turde spille på de vigtige tidspunkter. Det var også det, der viste til sidst. Så jeg er rigtig glad for vores præstation og sindssygt god bænk ude på sidelinjen. Og jeg har hørt både August og Holger om det i går. Jeg bliver nødt til også at spørge dig, Johannes, hvordan er det at spille med foran det her publikum? Det er et fantastisk publikum. Altså det største publikum, jeg nogensinde har spillet for. Så tusind tak for støtten. Så muligt, og Davis Cup er noget specielt, og det er så fedt, at I kommer og støtter os. Det sætter vi rigtig stor pris på. Og så sidste spørgsmål, Holger. Single lige om lidt, hvad kan vi forvente der? Igen, max fight, fuld energi, og jeg glæder mig til forhåbentlig brav en kamp. Det gør vi også. Johannes Ingelsen, Holger Rune! So 6-2, 6-4, the doubles match going in favor of Denmark. And coming up in a short while, we will see the first reverse singles, which will feature Sumit Nagal of India and Rune Holger of Denmark. We will come back as soon as that match starts. Don't go anywhere. India down 2-1, but still a lot to play. Versus 39% for India. And of course, the conversion of the break points, 4 against 1 for Denmark.
हाँ जी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। भारत और डेनमार्क की टीमों के बीच डेविस कप का ये मुकाबला आपके स्क्रीन पर। युवा खिलाड़ी, टीन सेंसेशन हॉल्गर रून, 19 वर्षीय खिलाड़ी, सिंगल्स रैंकिंग एटीपी रैंकिंग में 9वें पायदान पर बरकरार। सिंगल्स में रिकॉर्ड इम्प्रेसिव, डबल्स नहीं खेलते, हालांकि पिछला डबल्स मुकाबला भी जीतने में कामयाब। 2018 में डेविस कप में डेब्यू किया, शुरुआत की, और कुछ ऐसे खिलाड़ियों में शामिल जिन्होंने नोवाक जोकोविच को शिकस्त दी है एटीपी सर्किट पर। फ्रेडरिक नील्सन कुछ देर पहले आपके स्क्रीन पर थे, डेनमार्क के कोच। और ये है सुमित नागल, भारत के खिलाड़ी, 25 वर्षीय सुमित नागल काफ़ी समय से सर्किट पर सक्रिय हैं। सिंगल्स रैंकिंग काफ़ी नीचे, 506 नंबर पर। 2016 में डेविस कप डेब्यू किया। सिंगल्स में 4-3 का रिकॉर्ड, 4 मुकाबले जीते और 3 हारे। और ये हैं भारतीय टीम के गैर खिलाड़ी कप्तान रोहित राजपाल। तो सुमित नागल अगर मैच जीतते हैं तो मुकाबला 2-2 की बराबरी पर आ जाएगा। हम आपको बता दें कि डेविस कप में जो नया फॉर्मेट 2019 से लागू किया गया, उसके अनुरूप 2 दिन में ही मैचेस खत्म होते हैं, 2 दिन में टाई खत्म होती है। और आज दूसरा और अंतिम दिन है। कल भारत ने पहला मैच हारा, दूसरा मैच सुमित नागल जीते, 1-1 की बराबरी हुई। आज के दिन का पहला मैच डबल्स, जिसमें रून होल्गर स्वयं मौजूद थे विल्सन के साथ, वो डेनमार्क ने जीता 6-2, 6-4 से। 2-1 की बढ़त डेनमार्क के पास है और डेनमार्क के पास अवसर है इस टाई को क्लोज करने का। सुमित नागल के पास अवसर है इस टाई को ओपन रखने का। मेरे पास अवसर है स्वागत करने का गौरव का। गौरव नमस्कार। Namaskar and very warm welcome to everyone for this live coverage of the Davis Cup World Group 1 playoffs, India versus Denmark. Denmark 2-1 up, as Shivendra was telling you, and must-win situation for India in this first reverse singles, Sumit Nagal versus Rune Holger. But of course, the odds stacked heavily in Holger's favor. World singles number 9 against 500 plus for Sumit. But having said that, this is the Davis Cup, and we have seen many miracles over the last few years, over the last many years for India in the Davis Cup, where proving that rankings just don't matter. Sumit Nagal is in good form, had a great match yesterday to put India one tie apiece when he beat August Holmgren in a very close match, 4-6. After losing the first set, Sumit came back and won 6-3, 6-4 to take it 1-all for India. But once again, in a must-win situation against a much higher ranked player, Sumit Nagal. But if he comes with the attitude, Shivendra, that there's nothing to lose, everything to win, and if he can put some early pressure on the Dane, who knows what can happen. बिल्कुल जो टेम्परामेंट दिखाया है रून होल्गर ने, उसको देख के वो लगता है कि वो बिल्कुल बहुत ही रिलैक्स्ड हैं और अपने खेल को एंजॉय कर रहे हैं। कई बार इसी मर्तबा, इसी दौरान उनसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, कुछ अनफोर्स एरर्स भी हुई हैं। सुमित नागल डिटर्मिनेशन के साथ मैदान पर उतरे थे। कल भी उन्होंने भारत को वापसी कराई थी इस टाई में, और आज 2 दिन में दूसरी बार उनके पास मौका आ गया है भारत को इस टाई में वापसी कराने का। और अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होगा डेविस कप करियर में उनके लिहाज से, क्योंकि एक तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पर इस तरीके की हैं। डेनमार्क में सरफेस मुफीद नहीं है, इंडोर हार्ड कोर्ट पर मुकाबले हैं। भारत 1-2 से पिछड़ रहा है इस टाइम में। आपके सामने एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि वरीयता क्रम में विश्व में 9वें पायदान पर है और आप 505वें 506 नंबर पर हैं। तो ये सब चीज़ें जाती तो आपके खिलाफ हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, तो सुमित नागल
अगर मुझे ठीक से याद पड़ता है गौरव, तो आखिरी वो खिलाड़ी हैं जो कि ग्रैंड स्लैम मेन ड्रॉ में खेले हैं भारत की ओर से सिंगल्स में। काफ़ी कुछ उनके पास है शेयर करने के लिए अपनी गाथा में। आज अगर उसमें सुनहरा पन्ना जोड़ें तो ये सोने पर सुहागा। Absolutely. Let's see how Sumit does as this match kicks off with Rune serving. Holger Rune, who was on court a short while back in action in the doubles, which they won quite comfortably, 6-2, 6-4. So Rune Holger more than nicely warmed up. They had the half an hour break for him to get his rest between matches. Great angle on that volley, drop volley from Holger. Comes into the net. And a lovely drop volley from Holger. Too good for Sumit. He's had some volley practice as well in that doubles. And making no mistakes here. Big serve, going out wide. Holger showing why he is world number 9 in singles. And playing at home here in front of a packed indoor stadium in Denmark. Too good. Great start by Holger to take a 1-0 lead in this first game of the opening set. Let's see that final point again. Lovely service action from the Dane. Mid-court ball, and it's Holger on the attack from the baseline. Young fan of Rune Holger. Great venue here, the Royal Stage at Hillerød in Denmark. Hard court, indoors. Sumit Nagal serving for the first time in this match. Oh, too good. Holger Rune from the baseline there. Just packs in so much of power. Going inside out. First the down the line and then that cross court, right at the corner of the court. Attempted pass there, just misses the sideline from Sumit Nagal. Coming into the net with that nice return of serve. Good attempt at that pass from Sumit.
Great return of serve. And just proving to be too strong in this opening game against Sumit. Staring at 3 break points at the very outset, Sumit Nagal. At full stretch there, Sumit. Forcing Sumit to try to do too much. That's what pressure does. And breaking at love, Holger Rune jumping onto a 2-love lead. So complete domination, Shivendra, from the Dane. बिल्कुल एकदम गौरव ऐसा लगता है इज फुल ऑफ सुप्रीम कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो शॉट्स वो अटेम्प्ट कर रहे हैं रून, वो ही इज़ नॉट हेजिटेटिंग हिटिंग द कॉर्नर्स. और कई बार होता है कि खिलाड़ी थोड़ा सा लो ऑन कॉन्फिडेंस है, वो कोर्ट के बीच में बॉल को रखने की कोशिश करता है, उनको कोई हेजिटेशन नहीं है, इनसाइड आउट खेलेंगे. लास्ट जो पॉइंट उन्होंने लिया बिल्कुल बाईं ओर स्ट्रेच किया दूसरे गेम में सुमित को, तो परिस्थितियां बहुत मुश्किल सुमित नागल के लिए. 0-2 से पिछड़ रहे हैं. और उनकी सर्विस ब्रेक हुई, वो भी बड़े प्रभावशाली अंदाज में ब्रेक की. इस बार इनसाइड आउट ट्राई किया था, क्योंकि खेल पर अगर आपका नियंत्रण है तो आप गेम को उसकी दिशा अपनी मर्जी से दे सकते हैं. इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए रून, डेनमार्क के खिलाड़ी. डेनमार्क 2-1 से आगे है इस टाइम में. फिलहाल इस मैच में डेनमार्क के पास 2-0 की बढ़त पहले सेट में. तीसरा सर्विस गेम. लगातार सर्विस से स्ट्रगल करते हुए डबल्स में भी गौरव कई बार देखने को मिला था ऐसा. Just tend to get a little complacent, Holger Rune. And we see that in terms of the errors that Cretan, sometimes pretty careless errors. कितना बेहतरीन खेल, क्या शानदार वापसी. पहले बढ़िया सर्विस, फिर कमज़ोर सा. उनको पता है कि वो रिटर्न उन्होंने स्ट्रेच किया है सुमित को लेफ्ट हैंड पर. देखें, एक लॉबिश रिटर्न है बैक हैंड से, नेट पर चार्ज कर रहे हैं और वॉली पर कोई गलती नहीं. एक आध बार करी थी डबल्स में, लेकिन हर बार थोड़ी ऐसा होगा. तो अच्छी वापसी. नीलसन के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कई बार बड़े नाराज से नजर आते हैं. हालांकि इस समय नाराजगी का कोई खास सबब है नहीं. कॉर्नर ट्राई किया था एक बार फिर से रून ने. तो डबल फॉल्ट उपहार में दे रहे हैं सुमित नागल को, अंक उपहार में दे रहे हैं. और सुमित नागल के पास एक अपॉर्चुनिटी है, 2 ब्रेक पॉइंट है उनके पास वापसी करने के, स्कोर बोर्ड पर अपने पक्ष में स्कोर अंकित कराने का. 15-40 पर बिल्कुल ही वेवर्ड होते हुए. बेसलाइन से पीछे रिटर्न, तो एक ब्रेक पॉइंट बचाया. There's no need for Sumit to try to do so much. He has to keep the ball more in play. He's just going for the lines a bit too much, and there's no need at break point. The pressure is on Holger, and Sumit has to just stay in the rally. बढ़िया खेल का प्रदर्शन सुमित द्वारा. डीप रिटर्न उनके, और जिसके परिणाम स्वरूप उनके पक्ष में ये ब्रेक आता हुआ. और ये जो ब्रेक
सुमित नागल को मिला है, मुझे लगता है उनके आत्मविश्वास में टनों की वृद्धि करेगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले 2 सर्विस गेम गए थे, ऐसा लगा नहीं था कि कहीं भी सुमित नागल ठहर पा रहे हैं। हालांकि गलतियां ज़रूर हुई हैं रून से, लेकिन उनका फ़ायदा भी तो उठाया है सुमित नागल ने, खासतौर पर आखिरी पॉइंट पर गौरव। And indeed, it will work both ways. And I'm sure we saw a very stern-looking Friedrich Nielsen, the captain of Denmark. You can see he's giving a mouthful there to his ward. So it works as a double whammy almost. It boosts the confidence of Sumit Nagal, and it shakes up Holger and creates a bit of pressure just when he thought he was coasting in this match. तो बढ़िया वापसी भारत के लिहाज से, बढ़िया वापसी सुमित नागल के हिसाब से, और अब 1-2 पर सर्विस का दारोमदार होगा सुमित के पास। तो अगर वो अपनी सर्विस होल्ड करते हैं तो स्कोर 2-2 की बराबरी पर आ सकता है। Yes, absolutely. So it's a very crucial service game here to draw level at 2-all and also, more importantly, get that mental confidence back. Let's see how Sumit goes in this service game. Well played, Sumit. I was just talking about that. He must stay in the rally. He did exactly that. And finally coming into the net nicely. He saw the opportunity, comes in there, and a lovely angled volley for a winner. Let's hope he can do more of this, Sumit. Great serve, going out wide to Holger Rune. Sumit Nagal from Jhajjar in Haryana, 25-year-old. This is probably one of the biggest matches in his life. Great opportunity to make a mark for himself and for India, if he can score this upset somehow. Lucky Sumit there. It was a weak second serve, but lucky to get away. Two game points for India. Good return of serve, deep return from Holger Rune. Pouncing on that weak serve once again from Sumit. That's wide from Holger Rune, and it enables Sumit Nagal
to hold serve and draw level in this opening set. So good comeback by the Indian after being 0-2 down and an early break of serve. He breaks back and now holds serve, and that'll do his confidence a world of good. तो बढ़िया वापसी सुमित नागल के द्वारा। जिस अंदाज में इस सेट की शुरुआत हुई थी, बहुत से भारतीय जो टेनिस प्रेमी हैं वो खासे निराश से हो गए होंगे, लेकिन जैसा हम कई बार कह चुके हैं इस प्रसारण के दौरान कि टेनिस में और ख़ास तौर पर डेविस कप में चमत्कार खेल का दूसरा नाम है, और भारतीय टेनिस का इतिहास ऐसे तमाम चमत्कारों से परिपूर्ण है। सुमित नागल अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। 0-2 से पिछड़ने के बाद 2-2 का स्कोर है। 19 वर्षीय खिलाड़ी होल्गर रून उनके सामने। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन, खूबसूरत खेल का प्रदर्शन, इनसाइड आउट, फोरहैंड डाउन द लाइन, क्रॉस कोर्ट का सहारा और उसके बाद नेट पर आकर के बेहतरीन ड्रॉप शॉट। देखें किस तरीके से स्ट्रेच किया अपने दाहिनी ओर होल्गर रून को, और जब तक वो संभले बमुश्किल तमाम फोरहैंड रिटर्न, नेट पर आने के लिए मौका ही नहीं है। स्ट्रेट अवे दबाव बनाने में कामयाब होते हुए सुमित। परसेंटेज टेनिस का सहारा, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, अच्छा नियंत्रण, अच्छा कंट्रोल। लव 40 3 ब्रेक पॉइंट फेस करते हुए अपनी सर्विस पर होल्गर रून। पिछले सर्विस गेम में उनकी सर्विस भंग हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ इंडोर एरिना में भारतीय समर्थन अच्छा खासा मौजूद, और जैसे ही दर्शकों ने देखा कि सुमित नागल बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तिरंगा लहरा रहा है हवा में। बहुत बढ़िया सर्विस थी, डीप सर्विस, बैकहैंड पर स्ट्रेच किया सुमित को, एक ब्रेक पॉइंट बचाया रून होल्गर ने। चमकदार टेनिस का प्रदर्शन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा, इसमें कोई शक नहीं, और खासतौर पर पिछले 2 सर्विस गेम से सुमित नागल ने दर्शनीय खेल दिखाया है। इस बार फोरहैंड बेसलाइन से पीछे जाता हुआ तो 2 ब्रेक पॉइंट बचाने में कामयाब होते हुए। इंडोर हार्डकोर्ट रॉयल स्टेज स्टेडियम डेनमार्क में ये मुकाबला खेला जा रहा है। डेविस कप ग्रुप 1 प्लेऑफ टाई है भारत और डेनमार्क की टीमों के दरमियान। भारत फिलहाल 1-2 से पिछड़ रहा है। जोरदार शॉट, लेकिन बेस लाइन से जरा सा पीछे, मुट्ठियां हवा में भीजते हुए रून होल्गर इस बात का संकेत देते हुए कि भले ही वो 3 ब्रेक पॉइंट फेस कर रहे थे, लेकिन तीनों का बचाव उन्होंने सफलतापूर्वक कर लिया है, और दर्शक करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए उनकी इस वापसी का। अच्छी टक्कर दे रहे हैं लेकिन सुमित, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा दबाव बनाया उन्होंने रून की सर्विस पर। इस बार बहुत ही बेहतरीन सर्विस, शानदार सर्विस, रफ्तार भी और दिशा भी। कोच निल्सन प्रसन्न है इस बार, बकअप करते हुए अपने युवा खिलाड़ी को। एडवांटेज डेनमार्क के पक्ष में। रून होल्गर बेसलाइन से काफी पीछे गए, थोड़े से कुछ इशारा किया ये सुमित नागल ने। समझना मुश्किल की बात क्या थी, जैसे उन्होंने शॉट खेला उन्होंने शायद दर्शक दीर्घा की ओर इशारा किया, लेकिन सच्चाई यही है कि ये अंक जीता गया है रून के द्वारा।
एक्सप्लेन करते हुए कि जनाब विल्सन साहब समझे मैंने कितनी मुश्किल से वापसी की. Yes, full credit to the Dane there, coming back after staring 3 break points. Love 40 down and then 5 points in a row. Thanks to some great first serves. Trying to egg the crowd on. Sumit unhappy. There's some noise in the crowd while the rally was on. But the point, of course, stays with Denmark. So we stay on serve in this opening set, in this first reverse singles. 3-2 in favor of Denmark. Much higher first serve percentage for Rune Holger. And that's making a big difference. First serve percentage is pretty much similar between the two. But so far, against a much higher ranked player, world number 9, Rune, Sumit Nagal is certainly playing his heart out for India. Had a great opportunity to break at 40 love, but due credit, of course, to the Dane to come back. So we are on serve in this opening set, as it is Sumit Nagal to serve. Great attacking tennis from Sumit. Hats off to him. From the baseline, dominating the rally. Then coming into the net, putting the pressure on the Dane. Lovely drop volley. Has Rune at full stretch. Had the opportunity, he'd set it up so nicely. Sumit Nagal. All he had to do was get that down the line, across the net. Certainly putting up a great fight here, Sumit Nagal. The unforced error on the return from the Dane. The good news in this game is Sumit has got all his first serves in so far. And that certainly helped his first serve percentages. Also makes the point much easier for the server. First signs of some pressure on Rune Holger. He's being forced to go for the lines. He's realizing that Sumit is matching him in the rallies from the baseline, which is good news for India. Yes, long again. Going for too much on that return. So Sumit Nagal holds serve. And we stay on serve in this opening set. It's 3 games all. Full credit to Sumit for the fight he's putting up. Not overawed by the situation, playing in a foreign land with a packed home crowd support and against the world number 9. But he's matching him in every aspect. गौरव आप बिल्कुल सही कह रहे थे. ये शायद सुमित नागल के करियर का आई थिंक दिस शुड बी वन ऑफ द हाइलाइट्स. जब उसको वो रिकॉल करेंगे कभी बैठेंगे तो. और अभी तक का उनका जो खेल है वो बहुत प्रॉमिस दिखाता है. और एक और जैसे मैं शुरुआत में कह रहा था कि कल भी उन्होंने एक ऐसा मैच खेला जब भारत को वो वापसी पर लाए टाई में. भारत 0-1 से पिछड़ रहा था, 1-1 की बराबरी हुई
और उसी का परिणाम था कि डबल्स में रून होल्गर को उतरना पड़ा, अन्यथा रणनीति जो थी डेनमार्क की वो दूसरी थी, दूसरे खिलाड़ियों के साथ डबल्स खेलने की। और अब ये लगातार एक के बाद एक मैच खेल रहे हैं रून, तो उन पर और बेहतरीन पासिंग शॉट है। इसी सब कुछ चमकदार खेल की दरकार है, तलाश है सुमित नागल को, भारत को, भारतीय टेनिस प्रेमियों को। और जिस अंदाज में उन्होंने सर्विस गेम में शुरुआत की है, नेट पर आ गए थे रून और भांप लिया था वो। मैदान पर न केवल आप इक्विपमेंट्स के साथ खेल को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि माइंड गेम भी चलता रहता है और मन जाहिर सी बात है ज़्यादा तेज़ रफ्तार से भागता है। तो सुमित ने इस बार उसका भरपूर संयोजन किया, अपने पक्ष में अंक जुटाया। बहुत ही पॉजिटिव साइन, बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हुए। और रून की आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें गौरव, ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप से बहुत निराश हैं। कई बार ऐसा होता है कि टेम्परामेंटल खिलाड़ी जो हैं वो इली नस्तासे की याद दिला रहे हैं, वो कई बार रैकेट पटक देते हैं इसी गुस्से में। There's a lot of expectation on Rune to win this easily, and suddenly he's facing a lot of pressure, and a pressure that he's not used to. बिल्कुल, बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं। और जब आप एटीपी सर्किट पर मुकाबले खेलते हैं, जब आप सिंगल्स खेल रहे हैं, वहाँ पर देश के लिए खेलने का कोई दबाव या प्रेशर नहीं होता। डेविस कप में हम लगातार वही बात कर रहे हैं कि यहाँ एक अलग तरह का दबाव होता है और ऑफ कोर्स बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत एक्सपेक्टेशन हैं रून से। तो अगर वो थोड़ा सा भी पिछड़ते हैं तो उनको खुद को, उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आती होगी। मे बी वो एक फैक्टर है जो उनके खेल को प्रभावित कर रहा है। इस बार बेसलाइन से पीछे 30 ऑल, 3-3 30 ऑल। सिंगल्स की यही एक खासियत है। डबल्स में कई मरतबा हम देखते हैं बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर मुकाबले हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि चट मंगनी पट ब्याह जैसा स्थिति होती है, खटाखट मामला ख़त्म होता है। सिंगल्स में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि 6-0, 6-0, 6-2, 6-0 का स्कोर है, और डेविस कप में तो खास तौर पे। इस बार क्लोज करने की कोशिश सुमित की फोरहैंड पर असफल रहे तो एक गेम पॉइंट है अब रून के पास। बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया खेल दिखाया अभी तक सुमित ने। बेस लाइन से उनके जो स्ट्रोक्स रहे हैं दर्शनीय रहे हैं। एंगल पर क्लोज करने की कोशिश गेम को, असफल रहे रून इस बार। बढ़िया डीप रिटर्न, सुमित नागल कामयाब होते हुए एक बार फिर से। ये गेम पॉइंट छीना है उन्होंने दरअसल रून से, उनको गलती करने पर मजबूर किया। And once again, hats off to Sumit to put the pressure on Rune on his serve. Remember, in the last game also, he had 3 break points. And once again, it's deuce and the pressure on the Dane. बहुत ही दिलचस्प ये सेट, दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ता हुआ। इनसाइड आउट की कोशिश, नेट सामने उलझता हुआ। नीलसन चिंतित जरूर नजर आ रहे होंगे। ब्रेक पॉइंट है अब सुमित के पास, फायदा इसका उठाते हैं तो वो होगा जिसकी शायद उम्मीद यहाँ पर एरिना में बैठे बहुत ही कम दर्शकों को रही होगी। बहुत बढ़िया सर्विस थी, उसका शानदार जवाब दिया था, और अगर ये शॉट कहीं एग्जीक्यूट हो गया होता तो कुड हैव बीन अमेजिंग। बैकहैंड से डाउन द लाइन पासिंग शॉट अटेम्प्ट किया था सुमित ने, तो एक ब्रेक पॉइंट बचाया है। बहुत बढ़िया कोशिश थी, हालांकि फासला जरूर था बॉल और नेट के बीच में, टेप के बीच में। सुमित भी इस बात को महसूस कर रहे थे।
इस बार ओपनिंग क्रिएट की और निरुत्तर किया सुमित को। एडवांटेज अब डेनमार्क के पक्ष में। एक एक शॉट का भरपूर मजा लेते हुए दर्शक इंडोर हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा है यह मुकाबला रॉयल स्टेज स्टेडियम डेनमार्क में। भारत और डेनमार्क की डेविस कप टीमें। अभी तक 2 डबल फॉल्ट हैं इस मुकाबले में। रून के नाम पर दर्ज है, रून के नाम पर दर्ज है दोनों। दिशा बदली थी इस बार। डबल हैंडेड बैकहैंड क्रॉस कोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे और यकायक डायरेक्शन चेंज किया शॉट का। शायद वो एंटिसिपेट नहीं कर पाए सुमित और परिणाम स्वरूप अपनी सर्विस बरकरार रखी। Missed opportunity once again for Sumit Nagal. He had a break point here, 3 in the previous game. But of course, hats off to Rune Holger to get out of jail in both those games. But the fact is, we are still on serve. And certainly, Sumit Nagal is playing the match of his life so far. Let's hope he can sustain it in this pressure cooker situation in the Davis Cup. Must-win situation for India to stay alive in this tie. Exactly the same percentage of first serves now, 75% each, thanks to that previous couple of games from Sumit. And he's really stepped that percentage up. You can see the determination there in Sumit. And he's now got the momentum with him. He's clawed his way back after a slow start. And I'm sure Rohit Rajpal, India's non-playing captain there, sitting alongside, must be quite happy with the way young Sumit Nagal, just 25 years old, and ranked much lower than his Danish opponent, is playing today. As you can see, no shortage of support for the Danes, and needless to say, this is their home ground advantage as well. Sumit Nagal now serving. 3-4. Serving with new balls as well. New tennis balls after 7 games. The new balls tending to fizz off the surface a little more. An ace, a lovely serve from Sumit, going out wide. And Rune Holger just watches it like a spectator. 3 game points straight away for Sumit. Well, that's the shortest game of this match so far. Probably just under a minute, thanks to those 4 great first serves from Sumit. Comfortable hold of serve, and he draws level at 4-all. Remarkable the way the Indian is playing, solid in his body language, and conversely you can see some frowns and some worries there for Rune Holger. Once again, Rune Holger just going for a bit too much. Not required at all. Gifting an easy point to Sumit. Double fault. And going for a big second serve. Once again, the mind boggles on the strategy the Dane is trying to follow here. 2 easy points on a platter for India. And Sumit Nagal
pressure on the Dane once again. Love 30. A nice overhead. It was a good lob from Sumit Nagal, but rising to the task. Rune Holger coming nicely under that overhead and smashing it for a winner. Good tactics from Rune Holger coming into the net to put the pressure on the Indian. Once again, almost a wild shot there, the inside out from Rune Holger, and 15-40 means 2 more break opportunities for India and Sumit. Remember, he had 1 in the previous game, 3 in the game before that. Let's see if he can convert this time. There it is. Sumit Nagal finally gets that break of serve. Well done, Sumit. And he's now got the advantage in this opening set. Down 0-2 at the start. Who could have imagined that Sumit will now be serving for this opening set? Outstanding tennis from the Indian. Let's see that final point again. Rune Holger down break point and made to run from corner to corner by Sumit. You can see the skid marks there. This young fan obviously doesn't realize the gravity of the situation. But Shivendra, are we seeing a miracle unfold here? ज़रूर टेनिस डेविस कप का इतिहास तो ऐसी गाथाओं से भरा पड़ा है और चिंता की स्थिति ज़रूर है डेनमार्क के लिए। रेडिंग नील्सन काफ़ी परेशान है, हालांकि वो ये बात भी समझते हैं कि सिर्फ 19 साल के हैं रून होल्गर और उन्होंने बहुत से इतने छोटे से उम्र में ही बड़े अविस्मरणीय मुकाबले खेल लिए हैं। एटीपी की रैंकिंग में 9वें पायदान पर पहुंच चुके हैं। जो डेनमार्क का डगआउट है उसमें काफ़ी विचार विमर्श चलता हुआ, कुछ ना कुछ ज़रूर टिप्स पास ऑन की गई होंगी नील्सन के द्वारा अपने खिलाड़ी के लिए, रून होल्गर के लिए। और सुमित नागल के पास मौका है सेट अपने नाम करने का। 0-2 से पिछड़ गए थे जब इस सेट की शुरुआत हुई थी, इस मुकाबले की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद न केवल वापसी की बल्कि इस समय 5-4 पर सर्विस कर रहे हैं। काफी पीछे बेस लाइन पर रिटर्न जरूर, लेकिन एक बार फिर से नेट में उलझता हुआ। बढ़िया परसेंटेज टेनिस खेली है सुमित ने और बेस लाइन से करारे शॉट्स भी लगाए हैं। गलतियां काफी हुई हैं रून होल्गर से, फायदा मिला है सुमित को। इनसाइड आउट जब भी ट्राई कर रहे हैं, एक आध मौके को छोड़ दिया जाए तो हर बार दगा दे रहा है और अभी भी ऐसा ही हुआ। और इनसाइड आउट शायद कुछ सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर्स में जा रहा है बाहर। ये बड़ा चिंता का सबब है, इस पर कुछ ना कुछ विचार विमर्श करना होगा डेनमार्क कैंप को, क्योंकि उनका जो टॉप खिलाड़ी है, जो उनका टॉप बेट है, ट्रम्प कार्ड है इस मुकाबले का, फिलहाल स्ट्रगल करते हुए। परिवर्तन के तौर पर इस बार फोरहैंड पर गलती सुमित नागल से। बिल्कुल स्ट्रेट रख रहे थे वो रिटर्न को, थोड़ा सा पूर्वानुमान बढ़ाया।
डेनमार्क के खेमे में चिंता की रेखाएं ऑफिशियल्स के चेहरे पर साफ पढ़ी जा सकती हैं। काफी पीछे स्ट्रेच किया है सुमित ने और बेस लाइन से पीछे मार बैठे, और इसके साथ ही बहुत ही सुनहरा मौका, 2 गेम पॉइंट और सेट पॉइंट भारत के सुमित नागल के पास। 5-4 40-15। किसने उम्मीद की होगी इस प्रदर्शन की। लगातार 2-3 पॉइंट पर बेसलाइन के पीछे खेला था सुमित ने रून को। दो सेट पॉइंट है उनके पास। बढ़िया वापसी, रॉन्ग फुट किया, बैकहैंड पर एंटिसिपेट किया था लेकिन रिटर्न आया, जोरदार रिटर्न, वो भी फोरहैंड पर। ताकत से भरपूर, सही दिशा का फ्लोइंग फोरहैंड रिटर्न। तो 1 सेट पॉइंट बचाया है रून ने। अच्छा ट्राई किया था, थिंकिंग वाज गुड, इंटेंट वाज गुड, बट एग्जीक्यूशन वाज नॉट दैट परफेक्ट, और परिणाम स्वरूप बैकहैंड साइड गैलरीज में जाता हुआ सिंगल्स के लिए प्रोहिबिटेड एरिया। आप देखें रिप्ले में किस तरीके से फोरहैंड का सहारा लिया, इनसाइड आउट खेला रून ने और बैकहैंड पर उनको पकड़ने की कोशिश की थी सुमित ने। तो 2 ब्रेक पॉइंट, 2 सेट पॉइंट बचाने में कामयाब होते हुए डेनमार्क के रून। बढ़िया रैली, ड्रॉप शॉट ट्राई किया था। बहुत कुछ देखने को मिला इस पॉइंट पर, आमतौर पर जो इस टाइम में अभी तक देखने को नहीं मिला। खासतौर पर आज के दिन बैकहैंड स्लाइस का इस्तेमाल किया गया रून के द्वारा। यहाँ आप देखें, चूंकि देखा सुमित ने कि काफ़ी पीछे थे बेस लाइन से, तो एक जेंटल टैप ड्रॉप शॉट ट्राई किया फोरहैंड पर, लेकिन वो नेट में उलझता हुआ। तो कहाँ तो 2 सेट पॉइंट थे भारत के पास, अब एडवांटेज डेनमार्क के पक्ष में। यही है इस खेल की खूबसूरती। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए सुमित नागल, उन्होंने फोर्स किया था, लेकिन इस बार उनका जो इनसाइड आउट था वो गया साइड गैलरीज में। खासे निराश होंगे क्योंकि इतनी बढ़िया पोजीशन से, और लगातार इस समय गौरव इस सेट में देखने को हमें मिल रहा है कि जहां पर एडवांटेज की स्थिति में आए हैं सुमित, उन्होंने अपने लिए परिस्थितियां क्रिएट की हैं, पोजीशन क्रिएट की है। पिछले अंक पर शायद थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड भी दिखे, लेकिन चेयर अंपायर का निर्णय तो सर्वोपरि है ही। So I hope it's not a story of so near and so far for Sumit in this opening set. He had 2 set points, but nonetheless, we are back on serve now, 5 games all. Good rally again. Both the players slamming it from the baseline. Rune Holger is just too strong from there. Great first serve. Powerful, straight into Sumit's body.
cramping him up. And this time even better. An ace down the middle from the Dane. Jumps on to 3 game points, Rune Holger. Another ace, this time going out wide, and suddenly Rune Holger seems to have upped his game by a couple of notches just when he was staring defeat in the opening set. He was down 2 set points. He just upped his game, the Dane, showing why he is world number 9. And since then, he has just reeled off 7 points in a row against Sumit Nagal. So different looking Dane now. He was all over the place earlier in this set. Seems to have got his game back, seems to have got his rhythm back, and now seems to have got his confidence back as well. As you can see him looking more relaxed. Crowd also now looking more reassured that their champion is back. इस सर्विस गेम से पहले जब बातचीत हो रही थी डेनमार्क कैंप में, कुछ बल्कि पीछे जो डेन की टीम के ऑफिशियल बैठे हुए हैं, गौरव मुझे याद दिला रहे हैं एरिक टेन हैग की, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच हैं. बिल्कुल वही सिमिलैरिटी चेहरे में, काफ़ी आश्चर्यजनक तौर पर. तो फिलहाल जो कुछ ना कुछ गुरु मंत्र ज़रूर ऐसा दिया गया था जिसने वापसी दिलाई है. और ऑफ कोर्स एटीपी सर्किट पर अपनी एक स्टैंडिंग है रून की, लेकिन सुमित नागल की जितनी तारीफ की जाए कम है. अभी तक उन्होंने दिल जीता है, भले ही वो इस समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट परिस्थितियां हैं उनके पास और मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं. ये भी एक बड़ी ख़ास बात है. So serving now to stay alive in this opening set, 5-6, Sumit Nagal. It's a very weak second serve. First double fault from Sumit Nagal in this match. Pressure does funny things. Oh, he set it up so well, Sumit. And what seemed like an easy volley. Once again, perhaps nerves showing there from Sumit. Love 30 now under a lot of pressure, the Indian. Rune Holger, of course, just 2 points away now from winning this first set. Well played, Sumit. This time, no mistakes with that drop shot. Full marks, of course, to Rune Holger to chase the ball down, but the momentum just carries the ball out. Look at that effort from Holger. He sprints forward, but the momentum taking the ball out of court. And Sumit Nagal just hanging in there. Late call on that fault from the linesman. Yes, too good. Rune Holger dominating from mid-court. Ball sitting up nicely for him, and he's the level of the class. He's a top 10 in the world. He's not going to miss that opportunity. 2 set points for Rune Holger.
turning the tables on Sumit Nagal now. He was 2 set points down himself at one point, but now 2 set points in his favor. Let called on that second serve. Furious attack from the Dane Rune Holger as he wins this opening set against the Indian Sumit Nagal 7-5. But my word, full marks to Sumit Nagal for putting a real fight here. In fact, almost going to the point of winning the opening set. He had 2 set points in his favor before the Dane upped his game a few notches and came back to win the opening set. Full credit to Sumit Nagal. He's playing his heart out. बहुत ही बढ़िया टेनिस देखने को मिली हमें इस पहले सेट में। लगभग 1 घंटा 50 मिनट टू बी प्रिसाइज, और 7-5 से जीत ज़रूर दर्ज की है रून होल्गर ने, लेकिन मन के किसी कोने में वो भी तारीफ ज़रूर कर रहे होंगे सुमित नागल के इस खेल की। और थोड़ा सा कई मरतबा ऐसा होता है कि कोशिश आपने पूरी की, लेकिन शॉट का एग्जीक्यूशन माइनर अंतर से सही नहीं होता, परिणाम स्वरूप पॉइंट आपसे चटक जाता है। और कहाँ 2 सेट पॉइंट अपने पक्ष में कर चुके थे सुमित इस पहले सेट में, वो भी मौका उन्होंने गंवाया। पहले 0-2 से पिछड़ रहे थे, बराबरी की। बहुत ही दर्शनीय खेल का प्रदर्शन। सेकंड सर्व परसेंटेज लगभग इवन स्टीवंस, पहली सर्विस का भी जो पॉइंट्स का विनिंग का मार्जिन है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत ज़्यादा चूज़ करने को था नहीं, लेकिन सेकंड सर्विस पर भी ऐसा नहीं लगा कि किसी खिलाड़ी का एकाधिकार था। डबल फॉल्ट के मामले में ज़रूर रून आगे चल रहे हैं। Crucial one is right at the end, the break points. 7 opportunities for Sumit, only 3 for Rune Holger, of which he converted 2. And of the 7, Sumit could only convert 2. And I think that was the crucial difference. तो निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। दर्शक पूरा जो स्टेडियम है, वर्चुअली पूरा स्टेडियम, और जो डग आउट डेनमार्क का, खड़े होकर उन्होंने अभिनंदन किया दोनों खिलाड़ियों का, विशेष तौर पर रून होल्गर का, जिन्होंने 7-5 से ये सेट जीता। डेनमार्क 2-1 से आगे हैं इस टाई में। कई मरतबा बड़े ओवर एम्बिशियस शॉट्स खेलते हैं रून, और ख़ासतौर पे इनसाइड आउट ऐसा लगता है उनका प्रिय शॉट है, और वो दिशा से भटकते भी हैं बहुत मरतबा, जैसा इस बार हुआ। तो इजी पॉइंट्स कंसीड करते हैं। हो सकता है कि फ्रेडरिक नील्सन इस बारे में ज़रूर उनसे बात करें इस टाई के बाद। लेकिन जो प्रहार करते हैं, जो फोरहैंड से जो रैकेट का स्विंग है, जो ज़ोरदार स्ट्रोक आता है, और जो मॉडर्न टेनिस है, पावर टेनिस, उसका एक प्रमुख हथियार है। और ख़ास तौर पर जब आप रैली को डोमिनेट करते हैं तो इनसाइड आउट खेल सकते हैं, क्रॉस कोर्ट खेल सकते हैं फोरहैंड पर, जो आपके पक्ष में आपको अंक दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में एक से बढ़कर एक नए खिलाड़ी आए हैं। यानिक सिनर उनमें शामिल है, स्टेफानोस सिट्सिपास उनमें शामिल है, रुबिलेव शामिल है उनमें, अल्कारेज शामिल हैं, और ऑफ कोर्स उनमें अपना नाम लिखवा चुके हैं रून होल्गर। पेरिस मास्टर्स का अक्टूबर-नवंबर में उन्होंने टाइटल जीता, जोकोविच को हराया। तब तक जोकोविच 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके थे, और अब 22 ग्रैंड स्लैम उनके नाम पर दर्ज हैं। बढ़िया रैली, बहुत ही बेहतरीन इनसाइड आउट फोरहैंड पर
बैकहैंड से रिटर्न बेस लाइन से पीछे जाता और दर्शनीय खेल का प्रदर्शन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ट्रीट टू वॉच। यकीनन खूबसूरत टेनिस का मुजाहरा करते हुए ये दोनों खिलाड़ी। तो चाहे एटीपी सर्किट हो या फिर डब्ल्यूटीए सर्किट हो, नए खिलाड़ियों का आना कभी भी रुकता नहीं है। और ऑफ कोर्स एक समय था जब फैब 4, अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, एंडी मरे की जो क्वार्टेट था उनके नाम पर ग्रैंड स्लैम्स ज्यादातर दर्ज हुआ करते थे। लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, आई थिंक रैली ऑफ द मैच अभी तक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और स्ट्रेट अवे दबाव बनाया है सुमित नागल ने। 2 ब्रेक पॉइंट 15:40 पर सर्विस करेंगे रून। तो पहले सेट के विपरीत अंदाज में शुरुआत करते हुए सुमित नागल दूसरे सेट में। हालांकि इसमें रून की खुद की गलतियां भी जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया है, बेस लाइन से अच्छे शॉट्स खेले हैं सुमित ने, उसका भी बड़ा योगदान है। रून के खेल की एक और बड़ी खासियत है, वो वापसी बड़ी जोरदार करते हैं। Yes, it's almost like he waits for the chips to be down and then says, okay, it's time for me to up my game. We saw this consistently in the first set also. And just when he it's almost like a wake-up call. He realizes that he'd better play his normal brand of tennis. इस बार भी लगभग उन्होंने काम कर ही दिया था। एक ब्रेक पॉइंट अभी भी फेस करते हुए, तो दोनों ब्रेक पॉइंट, मतलब विश्वास ही नहीं होता कि इतनी आसानी के साथ कैसे बचा लिया उन्होंने। Ace on the second serve, and it just demonstrates the confidence of the man. आमतौर पर खेलों में कहावत है कैच देम यंग, तो कई मरतबा लगता है कि एक 19 साल का खिलाड़ी है, एटीपी रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल है, और उनका जो नेचुरल गेम है, जो नैसर्गिक प्रतिभा है, उसके अलावा उन्होंने अपने गेम में कितना सुधार किया होगा, ये इस मैच को देखने से साफ परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। बमुश्किल तमाम रिटर्न है, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं सुमित, और जाहिर सी बात है उनको घेर लिया था एक तरीके से रून ने। पहले फोरहैंड पर, फिर बैकहैंड पर, फोरहैंड पर ओपनिंग क्रिएट हुई, आसानी के साथ अंक लिया। तो कहाँ 2 ब्रेक पॉइंट फेस कर रहे थे, अब एडवांटेज पे आ गए। यही कहानी पहले सेट में दोहराई गई है। मैदान पर समर्थन में काफी दर्शक युवा रून होल्गर के एडवांटेज पर सर्विस कर रहे हैं। पहला सेट 7-5 से जीता 50 मिनट के खेल में। डेविस कप टाई का ये दूसरा दिन है, दूसरा और अंतिम दिन है। पहले दिन भारत और डेनमार्क ने 1-1 मुकाबले जीते। यूकी भांबरी अपना सिंगल्स हार गए थे। सुमित नागल ने कल भारत को वापसी दिलाई थी, क्लोज मैच जीता था उन्होंने। आज भी उनके युवा कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन उनके सामने एक उनसे भी युवा खिलाड़ी मौजूद। 25 वर्षीय सुमित नागल, 19 वर्षीय उनके अपोनेंट रून होल्गर। डेनमार्क के वरीयता क्रम में मीलों का फासला। बहुत बढ़िया रैली, बहुत ही शानदार रैली। अंततः बेस लाइन से पीछे जाता हुआ फोरहैंड सुमित का एडवांटेज नंबर 2 डेनमार्क के पक्ष में।
लगातार तालियां बजती हुई इस इंडोर एरिना में दोनों खिलाड़ियों के खेल की सराहना करते हुए दर्शक। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, अक्सर ऐसा हम सुनते हैं। इस बार वैसा ही हुआ। कोशिश की थी सुमित ने अंतिम क्षणों में, लेकिन जब देखा कि मामला उनके हाथ से बाहर चला गया है, और रोहित राजपाल भी उनको शाबाशी देते हुए कि आपने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। And once again, the story of the first set being repeated there. Rune Holger getting out of jail. And Sumit certainly has not had the lack of opportunities. 2 break points there, which he failed to convert. He only converted 2 out of the 7 in the first set. And a similar story here. But the part of the reason for that is that this man, Rune Holger, just ups his game when the chips are down. And when he's down break point or when he's down set point, as happened in the first set, he suddenly ups his game. So love one down, and Sumit Nagal now serving. But all in all, it's been a heartwarming performance by the Indian. Change of balls. It's new balls are due. And Sumit Nagal serving love one. Having lost the first set 5-7. Great shot. Sumit Nagal. Excellent depth on that down the line. Slice backhand and unleashing that down the line, Sumit Nagal. There he goes. And at full stretch, Rune Holger had no chance. Oh, super down the line, on the run. Rune Holger, probably the shot of the match. He was scurrying. It was a good down the line from Sumit. And look at that, on the run, down the line from the world number 9. Super play, super tennis. Hustling the opponent into the error, coming into the net, Rune Holger. Pressure on Sumit in this service game, 15-30. This time a good first serve, going out wide, Sumit Nagal
25-year-old is playing his heart out for India against the odds, against a much higher ranked player, but not overawed by the situation. Oh yes, super at the net. Sumit Nagal, great anticipation, great reflexes. And one of the toughest shots in tennis. He takes that on the half volley for a winner. Sustained pressure there from Rune Holger, 19-year-old. We've seen that he's fearless, as he showed from that second serve ace when he was down on break point in the previous game. Rising to the occasion once again, Rune Holger, after a great baseline rally, he manages to find that extra oomph. Good angle on that cross court, but look at that down the line winner from Holger. Break point for Denmark. Opportunity missed by Rune Holger. Back to deuce. Ball is in, it's on the line from Sumit Nagal. He stays in the hunt. Again, it's a grueling rally from the baseline. And Sumit is certainly matching his higher ranked opponent stroke for stroke. Well played, Sumit Nagal. He gets out of jail this time. He was down a break point, but very well played to hold serve. Nice to see the tricolour in the background. Good smattering of Indian spectators here at the Royal Stage, Hillerød in Denmark. And Sumit continues to give the fight to Rune Holger. One game all in the second set, the opening set to the Dane, 7-5. Enthralling tennis, and the crowd enjoying every minute of this. भारत और डेनमार्क की टीमों के बीच डेविस कप ग्रुप 1 प्लेऑफ टाई डेनमार्क में खेला जा रहा है ये मुकाबला। आज दूसरा और अंतिम दिन और पहला
बुलेट टैकल या पहला रिवर्स सिंगल्स, जिसमें डेनमार्क के रून होल्गर सामना कर रहे हैं भारत के सुमित नागल का। सुमित ने कल भारत को वापसी दिलाई थी टाई में। यूकी भांभरी पहला मैच हार गए थे और उसके बाद 1-1 की बराबरी हुई पहले दिन के खेल की समाप्ति पर। आज 3 मैच खेले जाने निर्धारित हैं। पहला डबल्स मैच समाप्त हो चुका है जिसमें रून होल्गर कोर्ट पर उतरे थे और उन्होंने डेनमार्क को जीत दिलाई 6-2, 6-4 से। डेनमार्क की जोड़ी ने यह मैच जीता। योहानेस इनगिल्डसन और रून होल्गर की जोड़ी ने रोहन बोपन्ना और यूकी भांभरी को पराजित किया था। 6-2, 6-4 से डेनमार्क की जोड़ी ने जीत दर्ज की, जिसकी बदौलत डेनमार्क 2-1 से आगे हुए इस टाई में। और ये दूसरा मैच आज का, पहला रिवर्स सिंगल्स। सुमित नागल सामना कर रहे हैं रून होल्गर का। बहुत ही बेहतरीन टेनिस देखने को मिली है दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। पहला सेट 50 मिनट तक चला। सी-सॉ बैटल, दर्शनीय स्ट्रोक्स दोनों खिलाड़ियों के रैकेट से। अंततः वहां पर बाजी मारी रून होल्गर ने 7-5 से। स्कोर लाइन जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दूसरे सेट में भी फिलहाल इस समय बराबरी 1-1 की। रून होल्गर के तरकश में इतने तीर हैं कि कई मरतबा उन्हें वो बेकार करते हैं, लेकिन जब निकालना शुरू करते हैं तो उनसे पार पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस समय 3 गेम पॉइंट के साथ वो तीसरे सर्विस गेम में बढ़त बनाए हुए हैं दूसरे सेट के। आसानी के साथ उन्होंने ये अंक भी अपने पक्ष में किया और 2-1 की बढ़त। फ्रेडरिक नील्सन 39 साल के हैं सिर्फ। फ्रेडरिक नील्सन अपने ज़माने में बड़े जाने पहचाने खिलाड़ी हुआ करते थे। डबल्स में उन्होंने विंबलडन का टाइटल भी हासिल किया था। 39 वर्षीय फ्रेडरिक नील्सन अपने युवा शिष्य को टिप्स देते हुए। And Shivendra, having worked and known a few Danes in my life, I can tell you that they don't express much emotion. And even if you do a great job, they may just say 1 or 2 words. And I think Fredrik Nielsen, in that sense, is a typical Dane. You can see that even when he was very critical, when Holger was playing some of those irresponsible shots. And now that when he won the first set, you could just see 1 or 2 words of appreciation. But I think that's culturally what represents Denmark. लेकिन रून होल्गर उसके अपोजिट नजर आते हैं। वो अपने इमोशंस को जाहिर करने में कभी चूकते नहीं। Yes, and I think also the impetuosity of youth. He's just 19 years old, and you can see that attitude, fearless. He knows that he is supremely talented, supremely confident, and he also realizes that he can up his game when required. अंतर्राष्ट्रीय टेनिस में बड़ी गौरवशाली परंपरा है बेहतरीन खिलाड़ियों की, और रून होल्गर को देख करके सच में ऐसे ही खिलाड़ियों की याद आती। What a bright prospect he is for the future, as indeed is Sumit Nagal for India. He's playing his heart out here and now serving 1-2. Oh, misses that volley. Rare error there from Rune Holger. He set up the point beautifully. And what seemed like an fairly easy put away. Full marks for Sumit Nagal for staying in that rally. This is the volley that he pushes out wide.
just long. And certainly the net court coming into play on both those points. Sumit Nagal very consistent from the baseline and also getting a lot of power on his ground strokes to match the Dane. Once again long. And Sumit Nagal at the net, putting the pressure, hustling Rune Holger into that error. 3 game points for India. Great cross court. Stand and deliver. Almost nonchalantly. Rune Holger. And once again demonstrating that fearless attitude I was talking about. The pass once again. He was in two minds there, Sumit Nagal, whether he should approach the net and half-heartedly caught in mid-court. But the cross-court from the Dane was far too good. So suddenly what seemed like an easy service game is now turning into a high-pressure one. That's long, and Sumit Nagal holds his serve. Ball looked long. Rune Holger not very happy with the call. As we said, there is no Hawkeye provision for this tie. So the chair umpire's word is final. The ball was called out, and rightly so. On the replay, it did seem long. So we stay on serve in this second set. 2 games all. Let's see that again. Yes, just misses the sideline, the baseline. So good call, and rightly not overruled by the chair umpire. 2 all. Holger serving. इस बार मौका नहीं चूकने वाले रून होल्गर। हालांकि काफ़ी पीछे स्ट्रेच करके बैकहैंड पे बेसलाइन पे रिटर्न किया था सुमित ने, लेकिन वो कमज़ोर रिटर्न साबित हुआ और मिड कोर्ट में आकर के उसको एग्जीक्यूट किया अपने पक्ष में। बहुत ही कलरफुल पर्सनैलिटी है रून होल्गर, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे कहते हैं कि पैसा वसूल टेनिस, वही इस समय दृष्टिगोचर होता हुआ। बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक के बाद एक लगातार 2 अवसरों पर रून होल्गर के रैकेट से। 7-5-2-2 30 लव। डेनमार्क के पक्ष में मुश्किल तमाम रिटर्न की कोशिश इस बार सुमित नागल की, अटैक करते हुए उनके ऊपर एक के बाद एक जोरदार ग्राउंड स्ट्रोक्स का सहारा। 40 लव 3 गेम पॉइंट रून होल्गर के पक्ष में। लेट का इशारा इस बार।
7-5, 2-2, 40-0। डेनमार्क 2-1 से आगे इस टाई में। बेसलाइन से पीछे रिटर्न, तो एक गेम पॉइंट बचाने में कामयाबी सुमित नागल। 25 वर्षीय भारत के खिलाड़ी सुमित नागल जूनियर वर्ग में भी अच्छा प्रदर्शन रहा उनका सर्किट में। इस समय देश के लिए अपना दायित्व निभाते हुए डेविस कप मुकाबले में बेसलाइन पर स्ट्रेच किया, पहले फोरहैंड पर, उसके बाद बैकहैंड पर। बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं इस गेम को जीतने में, सर्विस बरकरार रखी रून होलगर ने। रोहित राजपाल, जीशान अली, भारतीय थिंक टैंक इस मुकाबले के लिए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई पिछले सर्विस गेम में, छकाया काफी सुमित को फोरहैंड पर और बैकहैंड पर। देखिए काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी दौड़ लगानी पड़ी सुमित को। बिल्कुल कोर्ट के कोने पर ले गए, आसानी के साथ पॉइंट बनाया। तो पहली सर्विस का मामला जहां तक है वहां तो थोड़ा आगे हैं सुमित नागल, लेकिन अंक बनाने में उनके अपोनेंट आगे हैं। नाजुक मौकों पर मुश्किलें आई हैं सुमित नागल के समक्ष, खासतौर पर पहले सेट में अगर हम याद करें गौरव। And the old classical definition of a champion is the ability to play the big points well. And I think that's what differentiates the men from the boys. And we've seen that, in this match as an example. Sumit has just failed to convert so many opportunities. 2 set points, 7 break points in the first set, of which he got 2. He's already had 2 opportunities in this set. And but I think that comes over time, and that's what then differentiates a champion from the rest. But meanwhile, of course, full marks to Sumit in this match. Just when most would have thought that it'll be a one-sided affair, but Sumit clearly has had other thoughts. Super play. Almost wrong footing Holger there. Holger anticipating and moving towards the other side, and Sumit going down the line. All Davis Cup matches now the best of 3 sets. Rules changed in 2019. And the players therefore have to play different tactics. They have to give it everything. It's not a marathon 5-setter anymore. Great play by Rune Holger. He seems to be rising from strength to strength here, upping his game all the time, putting the pressure on Sumit Nagal. 15-30.
Oh, the luck of the net cord. And this for the second time in this match for the Dane. And it gets him 2 break points. Just no chance for Sumit as the ball just dribbles across the net. Sportingly apologizing there. There's the break of serve. And we were talking about the big points. Seizing the opportunity on the very first break point. And that's the difference. Sumit also had 2 break points in the first game, but couldn't convert. And now the advantage definitely tilting in favor of Denmark. Up that crucial break of serve and up 3-1 in the second set, having won the first set 7-5. फ्रेडरिक निल्सन तारीफ करते हुए अपने शिष्य की, जिस अंदाज में उन्होंने पिछला सर्विस गेम जीता, ब्रेक हासिल किया, बढ़त हासिल की, न्यूमेरिकल एडवांटेज डेनमार्क के पक्ष में इस मुकाबले में 7-5, 4-2, 15-0। ये है इस मैच की अब तक की कहानी। पहला सेट 50 मिनट के खेल में जीता गया। रून होल्गर डबल फॉल्ट्स भी उन्होंने काफ़ी किए हैं, लेकिन साथ ही साथ एस लगाने में भी पीछे नहीं है। और पिछले पॉइंट पर उन्होंने उसका एक नमूना पेश किया। एक बार फिर से वही कोशिश, हालांकि बहुत नैरो मार्जिन से चूके होंगे इस बार। 30-0। कई मरतबा ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में जब तकनीक का हर जगह भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं। आखिरकार ये भी जो मुकाबले हैं वो 2 टीमें अपने अपने देश के लिए खेल रही हैं फिलहाल, लेकिन परिस्थितियाँ यही बयान कर रही हैं कि 3 गेम पॉइंट है डेनमार्क के पास, रूने होल्गर के पास अपनी सर्विस पर। और थोड़े से स्लाइटली कहीं ना कहीं मन से और खेल से भी थोड़ा लो नजर आते हुए सुमित नागल। अभी तक बहुत ही जानदार शानदार खेल का प्रदर्शन किया उन्होंने। परिवर्तन के तौर पर मुस्कुराहट फ्रेडरिक निल्सन के चेहरे पर। बेसलाइन से पीछे गया रिटर्न, आसानी के साथ ये गेम जीता। जॉब हाफ डन। 5-2 की बढ़िया बढ़त है ये डेनमार्क के पास। और अब गुरु शिष्य तो खैर वैसे ही रिलैक्स्ड है, गुरु भी थोड़े रिलैक्स लग रहे हैं इस समय। देखिए डबल फॉल्ट का आंकड़ा, रूने होल्गर आगे हैं 4-1 से। और वहीं रोहित राजपाल एसेस में भी आगे हैं 6-1 से रूने होल्गर। तो जो प्रतिबंधित चीज़ है उसमें भी आगे हैं, लेकिन साथ ही साथ जहां पॉइंट बनाने वाला मामला है वहां तो खैर आगे हैं ही। सुमित नागल के लिए काफ़ी कुछ सिखाने वाला है ये मैच। और ओवरऑल उनका खेल बहुत ही सराहनीय, बहुत ही बढ़िया खेल उनके द्वारा रहा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कुछ ऐसे नाजुक मौके रहे हैं जहां पर शायद उन्हें अपने पक्ष में अंक लेना चाहिए था, वो उसको लेने में कामयाब नहीं हुए। कल उन्होंने भारत को वापसी दिलाई थी। इंडियन थिंक टैंक जो है डग आउट उनको बकअप करता हुआ भारत के लिए समर्थन भी काफ़ी, जो भी समर्थन है वो पूरी तरीके से है भारत के पक्ष में। लेकिन फिलहाल 2-5 से पिछड़ते हुए सुमित नागल। इस मैच के कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ दिलचस्प क्षण जहां पर खिलाड़ियों ने बेहतरीन स्ट्रोक्स एग्जीक्यूट किए। So he's got a mountain climb here. Sumit Nagal, 2-5. Down by a set. Serving to stay alive.
But meanwhile, Rune Holger is growing from strength to strength, demonstrating some great tennis. Lovely down the line there, right on the baseline. Full marks to Sumit Nagal. He's really played his heart out. Had 2 set point opportunities in the opening set. Had 2 break points in the opening game of the second set. And all in all, he's certainly shown that he is no pushover. Almost seems to be in a hurry, Rune Holger, to get on with it. At times trying those impossible shots. Misses the sideline, going all out there, Rune Holger, but just misses the sideline. That went like a bullet. He really put everything behind it. So Sumit Nagal holds serve, but it is now Rune Holger up by a set of 5-3 in the second set, serving for the match and also serving for the tie. Because remember, Denmark 2-1 up, and they will wrap up the tie if Holger is to win this match. इंडोर एरिना में जो भी दर्शक मौजूद हैं वो पिछले सर्विस गेम में रूने होल्गर से जब गलतियां भी होनी थी तब भी उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन सुमित नागल के द्वारा स्कोर बोर्ड को रिस्पेक्टेबिलिटी प्रदान करते हुए पिछला सर्विस गेम जीता। और उसके बाद क्या यहाँ पर कोई पैर मुड़ा ऐसा देखने में लगा ज़रूर। जी हाँ, थोड़ी सी मुश्किल आई थी, अपने आप को संभाल नहीं पाया रूने होल्गर। और ये एक बड़ा इट्स अ वेरी क्रूअल काइंड ऑफ थिंग। अगर खेल के मैदान पर किसी खिलाड़ी को इंजरी होती है तो इससे बुरी कोई और बात हो नहीं सकती। उम्मीद है कि ऐसा कुछ उनके साथ ना हुआ हो फिलहाल रूने होल्गर के साथ। अपने देश को वो डेविस कप टाई जिताने की ओर अग्रसर हैं। बढ़िया टेनिस का प्रदर्शन सुमित नागल के द्वारा। परसेंटेज टेनिस, कीपिंग द बॉल इनटू प्ले, और यही मूल मंत्र उन्होंने पिछले 2 सर्विस गेम से ऐसा लगता है अपना रखा है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, कॉर्नर्स की ओर नहीं जा रहे, और गलती करने का जो डिपार्टमेंट है फिलहाल उन्होंने रूने होल्गर के पास पहुंचा रखा है, परिणाम स्वरूप दबाव बनाते हुए इस सर्विस गेम में। दर्शक लगातार बकअप करने की कोशिश कर रहे हैं रूने होल्गर को। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा लेसन है कि आप जब कंट्री के लिए मुकाबले खेलते हैं, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, आप एक पक्ष में सपोर्ट नहीं है, फिर भी आपको अपना बेस्ट देना है या शायद उससे भी बेहतर देना है। काफ़ी स्ट्रेच किया था पहले फोरहैंड पर, उसके बाद बैक हैंड पर।
बढ़िया पॉइंट बनाया रूम ने अपने पक्ष में। अपने आप को एक्सप्रेस करने से चूकते नहीं है सुमित नागल। कई मर्तबा देखा गया उनको इस मैच में भी और पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में। अच्छा संभाला था अपने आप को और बढ़िया एक बैकहैंड डाउन द लाइन शॉट ट्राई किया था, हालांकि टेप से टकरा गई बॉल और दिशा उसकी परिवर्तित हुई, अन्यथा निश्चित तौर पर यह अंक आ सकता था सुमित नागल के पक्ष में। डबल अंडर बैकहैंड क्रॉस कोर्ट ट्राई जरूर किया था, लेकिन साइड गैलरीज में सिंगल्स के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र और परिणाम स्वरूप 30-30 की बराबरी। 7-5, 5-3, 30 ऑल। इनसाइड आउट के बाद डबल हैंडेड बैकहैंड क्रॉस को ट्राई किया, नेट में उलझता हुआ। तो अब एक ये गेम पॉइंट, सेट पॉइंट और मैच पॉइंट डेनमार्क के पक्ष में। 7-5, 5-3, 40-30 बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर मुकाबलों का निर्धारण होता है। इन एंटिसिपेशन ऑफ डेनमार्क विनिंग द टाई, दर्शक खासे उत्साहित, और इससे बेहतरीन अंदाज क्या हो सकता है इस मैच को, इस टाई को अपने पक्ष में करने का। शानदार अंदाज में अंक अर्जित किया रून होल्गर ने। मुबारकबाद पेश करते हुए वो अपने अपोनेंट को, सुमित नागल को 7-5, 6-3 से ये मुकाबला जीता रून होल्गर ने। डेनमार्क ने फ्रेडरिक नीलसन मुस्कुराते हुए स्वागत करते हुए अपने शिष्य का मुबारकबाद पेश करते हुए, बातचीत करते हुए, कर्टसी, शेक हैंड, और ये है कंफर्मेशन स्कोर का 7-5, 6-3। 50 मिनट 43 सेकंड, 50 मिनट और 43 मिनट तक ये मुकाबला, यानी 93 मिनट तक चला ये मुकाबला, 1.5 घंटे से कुछ ज़्यादा। डेनमार्क ने 3-1 की बढ़त हासिल की। Yes, so Rune Holger taking Denmark to victory against India, winning both his singles matches, and he really proved to be the decisive factor as far as this competition was concerned between these two teams. But just going back to this match, heartwarming performance by Sumit Nagal. He should certainly be proud of the way he played, had his opportunities, and unfortunately couldn't convert. But certainly heartwarming, and we're all proud of him. Kampen mod Indien. Hvad for en følelse står du med lige nu? Det har været nogle vanvittigt gode dage. Sindssygt support for alle mennesker, der er kommet og set os spille. Så tusind tak alle sammen. Og jeg vil sige, det er jo ikke tit, jeg kommer til Danmark og spille, men det var en fornøjelse at spille foran alle jeres skønne danskere, så jeg glæder mig allerede til næste gang. Holger, det blev en svær kamp her i singlen. Hvad var det, der gjorde den så svær? Sumit, han er en vanvittig solid spiller. Det så også i går mod August. Han grinder for sindssygt, ikke? Så man skal virkelig vinde pointene. Blive ved med at holde tålmodighed. Han er en svær spiller. Han har ligget tæt på top 100, så han er tricky. Så alt credit til Indien, og jeg er glad for, at vi går ind. Og så et sidste spørgsmål, Holger. 2 dage med Dannebrog her på brystet, mens du spiller. Hvordan er det at spille med Dannebrog der? Det er fuldstændig fantastisk. Det er rigtig dejligt at have den flag på min trøje og komme hjem i den her fantastiske kulisse og spille Davis Cup for mit land. Det betyder så meget. Tusind tak for support. Tak for det, Holger Rune. Og det er besluttet. So there it is then, 3-1, the winning score in this tie for Denmark against India. Coming up in a short while, we will have the 5th and final match, which will be a dead rubber because the tie is already decided.
Yuki Bhambri will be up against August Holmgren. But till then, it's a bye from all of us. हाँ जी बोलिए। हाँ, एक और मैच है, वो डेड रबर है, उसका डिसाइड करना है कि हम लोग लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिया हार चुका है। सोनी जी से पूछ लीजिए, हम भी फ़ोन कर लेते हैं। You will get salary, but you will get different kind of stuff. There is they look for organization like Prasad. वो वहाँ पे आ गए and नहीं रिलैक्स तो नहीं, काम तो होता है, लेकिन यू रिटायर एज जॉइंट सेक्रेटरी और यहाँ तो DG is like God for these people. So now I am qualified to come here as ADG. तो मेरे पास 5 साल है, मतलब जैसे अगर बाई चांस जैसा कोई व्यक्ति ODG हमें तो सब पता है ये दिखाना है नहीं दिखाना, हमने तुरंत डिसीजन है यार वंडरफुल यार भी हमेशा पीछे बने बहुत मज़ा आया, बहुत समय के बाद
हम्म। यार अभी 10-15 मिनट तो लगेंगे कम से कम। बाकी अभी पता नहीं लेना है कि नहीं लेना, ये तो मालूम नहीं मुझे। ठीक है, ठीक है, 10-15 मिनट लगेंगे अभी। नहीं नहीं, वो खेलेंगे तो ये बहुत
हाँ जी, आगे। अभी टाइम है, कम से कम 7-8 मिनट लगेंगे। हाँ, अभी तो प्लेयर आएंगे, फिर टॉस होगा। अभी तो कोई नज़र ही नहीं आ रहे प्लेयर। अभी तो कोर्ट साइड में कुछ चकल्लस चल रही है। हाँ, बॉल बॉयज आ गए, यस। फिजी में मैं देख रहा था सर, इनका एक तो वो सूआ जो कैपिटल है वो तो है ही, उसमें एक और कोई शहर का नाम आता था माडी, नान ना NAN लिख के आ रहा था। मैंने थोड़ा पढ़ा तो उसमें आया कि ये ज़्यादा बेटर जगह है, और एक्चुअली वहाँ का शायद एयरपोर्ट या टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से वो जगह ज़्यादा होगी। हाँ वही, यहाँ से सिडनी जाओ या यहाँ से सिंगापुर जाओ या यहाँ से मेलबर्न जाओ, और वो भी क्या डायरेक्ट फ्लाइट मुझे लगता नहीं, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जनरली सिडनी वाली जाती है, वो सिंगापुर होते हुए जाती है। अच्छा, फिर तो अच्छा है। हमारी तो वो होगी एक्चुअली ऑफिशियल, तो वो डेलीगेशन।
अरे बोल तो रहा हूँ हाँ। भारत और डेनमार्क की डेविस कप टीमों के बीच वर्ल्ड कप प्लेऑफ का ये मुकाबला डेनमार्क ने अपने कब्जे में किया है। 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। डेनमार्क में ही ये इंडोर एरिना में मैच खेला जा रहा है। टाई खेली जा रही है। आज दूसरा और अंतिम दिन और आज का अंतिम मुकाबला, इस टाई का अंतिम मैच अब से कुछ ही समय बाद शुरू होने के क्रम में दोनों खिलाड़ी कोर्ट की साइड में पहुंच चुके हैं। कुछ ही समय के पश्चात कोर्ट पर होंगे। टॉस की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी और उसके बाद इस मुकाबले का विधिवत आगाज होगा। पहले दिन जब खेल की शुरुआत हुई थी, भारत के यूकी भांबरी कोर्ट पर उतरे थे पहले सिंगल्स मैच में और उन्हें हार से दो चार होना पड़ा था। रून होलगर जो कि डेनमार्क के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, एटीपी रैंकिंग में 9वें स्थान पर काबिज हैं, उन्होंने जीत दर्ज की, डेनमार्क को 1-0 की बढ़त दिलाई। दूसरा मैच सुमित नागल ने खेला भारत की ओर से कल और उन्होंने न केवल मुकाबला जीता बल्कि भारत को टाई में वापस भी लाए। 1-1 की बराबरी रही पहले दिन जब स्पर्धाओं का समापन हुआ और उसके बाद दूसरे दिन यानी आज पहला मैच डबल्स, जहां पर रोहन बोपन्ना यूकी भांबरी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। डेनमार्क 2-1 से आगे हुए। उसके बाद पहले रिवर्स सिंगल्स में रून होलगर ने जीत हासिल की, 7-5, 6-3 से जीते। डेनमार्क ने 3-1 की अजय बढ़त हासिल की। अब डेनमार्क के सामने अवसर है 4-1 की बढ़त हासिल करने का। भारत के सामने अवसर है स्कोर बोर्ड को रेस्पेक्टेबिलिटी प्रदान करने का, यानी 3-2 का स्कोर करने का। टाई डेनमार्क के पक्ष में जा चुकी है। भारत को ग्रुप 2 में अब खेलने पड़ेंगे डेविस कप के अपने अगले मुकाबले। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं गौरव। गौरव, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you. And in this dead rubber, we have two players who are getting the opportunity to make their mark. Elmer Moller for Denmark, again 19-year-old budding youngster, singles ranking of 718. So this will be fantastic exposure for Elmer Moller. He's only played one tie before this. So a valuable exposure as the Fredrik Nielsen, captain for Denmark, decided to play him instead of August Holmgren. And Prajnesh Gunneswaran for India, 33-year-old, very experienced, 342 in the world currently. He's played 7 Davis Cup ties, so very experienced, and a 3-7 win-loss record. Prajnesh replacing Yuki in this final rubber, and Rohit Rajpal, our captain, deciding that it will be good exposure for Prajnesh. Lot to play for, of course, in terms of pride, as we see in the background the team
contingent, the Indian contingent, disappointment after losing the tie to Denmark. It was a good fight, particularly from Sumit Nagal in that previous singles match, where he took the fight to his much higher ranked opponent, Rune Holger, world number 9, and had the opportunities. He had a couple of set points in the first set and lots of break points in the second set, but couldn't convert. Good opportunity here for Prajnesh Gunneswaran to make a mark, to get India to a respectable 3-2 scoreline. This dead rubber is always tough to play because, the tie is over, the interest is over, and therefore very tough to keep your focus on the game. But having said that, it's also a good opportunity for these emerging players to make a mark. I remember Yuki Bhambri similarly emerged for India in a dead rubber against South Africa many years, where he had a great win and really established his presence. So it's a good opportunity. The tie, of course, is over. India is relegated to the World Group number 2, which is disappointing, having been in World Group 1 for the last 3 years. But I'm sure they will emerge, they will fight and come back to their place where they belong, which is World Group 1. Prajnesh Gunneswaran comes from Chennai, very experienced, the 32-year-old. And the youngster there, his opponent Elmer Moller. We are seeing a young Danish squad. We saw Rune Holger, also 19-year-old. Of course, sensation, world singles number 9. And Elmer Moller, who's an emerging star in Denmark. But good to see these youngsters and a great pipeline of tennis players in Denmark. Overall, a great sporting nation, Denmark. We've seen them so strong in badminton, of course, in football, and tennis. Small country, but really make their presence felt in the world of sport. About half the stadium now still stayed on to watch this deciding rubber. And I'm sure we'll see some good tennis on display here. Like all the matches, this will be the best of 3 sets as well. With the rule change in Davis Cup in 2019, the format has changed. We still have the 4 singles and 1 doubles, but all matches now reduced to 3 sets, best of 3 sets, and the ties to 2 days instead of the 3 days that they used to be held formally. Yesterday it was 1 rubber apiece. Yuki Bhambri losing his first match to Rune Holger, 2-6, 2-6. Sumit Nagal then making it 1-1, winning his match after coming back really well after losing the first set, 4-6, 6-3, 6-4 against Holmgren. And today, the first match was the doubles. Yuki Bhambri and Rohan Bopanna were quite disappointing in their loss in straight sets, 2-6, 4-6. Meanwhile, start of this rubber with Gunneswaran serving. Power packed from the baseline. Ball just whizzes past Elmer Moller. Once again, great depth. He's finding his range from the word go. Elmer Moller, love 30, Gunneswaran.
deep and almost kissing the baseline. That return of serve. So straight away 3 break points for Moller. Oh, superb start by Moller. He breaks Gunneswaran at love in the opening game and jumps onto a 1-love lead. Gunneswaran could barely blink before the game was over. Such was the ferocity of attack from Moller. Off to a flyer and an early break of serve. 19 वर्षीय मॉलर डेनमार्क के युवा खिलाड़ी सामना करते हुए भारत के अनुभवी प्रजनेश गुन्नेश्वरन का। मॉलर ने अपनी उम्मीद के मुताबिक शुरुआत की है, अपने प्रशिक्षक की उम्मीद के मुताबिक शुरुआत की है और उन्हें एक बहुत ही अविस्मरणीय अवसर मिला है, मौका मिला है, क्योंकि एक तो डेनमार्क ने अजय बढ़त हासिल की इस टाई में 3-1 से, और हालांकि प्रजनेश उनसे ज़्यादा अनुभवी हैं और वरीयता क्रम में भी मॉलर उनसे पीछे हैं, विश्व वरीयता क्रम में एटीपी रैंकिंग में, लेकिन पहले ही गेम में, पहले ही सर्विस गेम में पहले सेट के ब्रेक हासिल किया है, डेनमार्क को 1-0 की बढ़त दिलाई है। बढ़िया रैली, हालांकि कोशिश की थी प्रजनेश ने फोरहैंड पर स्ट्रेच करने की मॉल को, लेकिन बॉल साइड गैलरीज में गिरती हुई। सिंगल्स के लिए जो प्रतिबंधित क्षेत्र है तो परिणाम स्वरूप अंक डेनमार्क के पक्ष में 15 ऑल। बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं प्रजनेश, आमतौर पर जो ज्यादा अटैकिंग, ज्यादा आक्रामक माने जाते हैं। अच्छा कंसिस्टेंट खेल का प्रदर्शन बेसलाइन पर मॉलर के द्वारा। बहुत ज़्यादा इनोवेटिव शॉट्स तो ट्राई नहीं कर रहे हैं इस बार बेसलाइन से पीछे जाने की बारी उनकी। तो कागज पर प्रजनेश गुन्नेश्वरन ज़्यादा मजबूत हैं, अनुभव के लिहाज से काफ़ी आगे हैं मॉलर के, लेकिन डेविस कप ऐसे ही मुकाबलों के लिए जाना जाता है जहां पर ऐसे खिलाड़ी जो विश्व वरीयता क्रम में नीचे हैं वो अपने से ऊंची वरीयता वाले खिलाड़ी को शिकस्त देते हुए नजर आए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बॉलर ने स्पेस क्रिएट किया अपने लिए, पहले बैकहैंड पर स्ट्रेच किया, फोरहैंड पर बल्कि स्ट्रेच किया। लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी हैं प्रजनेश, और उसके बाद बैकहैंड पर कमजोर रिटर्न, लॉबिश रिटर्न आया जिसको वॉली करके अपने पक्ष में अंक अर्जित किया। तालियों से अभिनंदन उनके इस अच्छे स्ट्रोक का, अच्छे खेल का। तो फ्रेडरिक नील्सन जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, डेनमार्क के लिए विश्व वरीयता क्रम में ग्लोबल लेवल पर जो टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनमें सबसे ज़्यादा नाम कमाने वाले लोगों में शामिल हैं फ्रेडरिक नील्सन, जो कि इस समय डेनमार्क की टीम के कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं, और उन्होंने मौका दिया है युवा खिलाड़ी मॉलर को आज इस डेविस कप टाइम में अपने जौहर दिखाने का। साहस भरे खेल का दर्शन, डबल हैंडेड बैकहैंड शॉट ऐसा लगता है उनका फेवरेट है। फर्स्ट सर्व पर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, ब्रेक पॉइंट फेस कर रहे हैं मॉलर। इनसाइड आउट ट्राई किया था, नेट पे उलझता हुआ, इसके साथ ही उनकी सर्विस भंग होती हुई, और पहले 2 सर्विस गेम में 2 ब्रेक हमें देखने को मिले हैं। दोनों ही खिलाड़ी जो सर्विस कर रहे थे उनकी सर्विस ब्रेक हुई, उनकी सर्विस भंग हुई। परिणाम स्वरूप स्कोर अब 1-1 की बराबरी पर। बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर खेला जाने वाला
ये मुकाबला। प्रजनेश थोड़े से हतप्रभ रहे होंगे, पहला सर्विस गेम जैसा उन्होंने लूज किया था। बहुत ही बेहतरीन, जैसा मैंने कहा कि डबल हैंडेड बैकहैंड लगता है उनका फेवरेट शॉट एग्जीक्यूट करने का तरीका है। और आप देखें किस अंदाज में उन्होंने पहले डबल हैंडेड बैकहैंड क्रॉस कोर्ट खेला, फोरहैंड पर उसे लिया और ये पावर पैक्ड रिप्लाई था मॉलर का। परिणाम स्वरूप अंक मिलता हुआ उनको। फ्रेडरिक निल्सन परख रहे होंगे इस युवा खिलाड़ी को, देख रहे होंगे कैसे वो इस मैच में आगे बढ़ करके आते हैं, कैसे खेल का प्रदर्शन करते हैं। प्रजनेश 33 वर्षीय हैं और 19 वर्ष के हैं उनके अपोनेंट मॉलर। 19 वर्ष के एक और खिलाड़ी रून होलगर, जो कि इस मैच में जिन्होंने पहले दिन एक सिंगल्स खेला, आज उन्होंने डबल्स खेला और एक रिवर्स सिंगल्स खेला। मैच खेले उन्होंने डेनमार्क के लिए। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन रिटर्न, डबल हैंडेड बैकहैंड डाउन द लाइन पासिंग शॉट। कोई अवसर नहीं प्रजनेश के पास सिवाय इस शॉट को निहारने के। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला, दर्शनीय ग्राउंड स्ट्रोक्स का नजारा पेश करते हुए। एक बार फिर से बढ़िया रिटर्न फोरहैंड पर। प्रजनेश स्ट्रगल करते हुए अपनी सर्विस पर 15-40 दो ब्रेक पॉइंट फेस कर रहे हैं लगातार बैक टू बैक गेम में। अभी तक 2 गेम हुए हैं, दोनों में ही सर्विस बरकरार नहीं रख पाए खिलाड़ी। और क्या बेहतरीन फोरहैंड क्रॉस कोर्ट लगाया है बॉलर ने। कोई जवाब नहीं है प्रजनेश के पास। 2 मरतबा इस सर्विस गेम में ऐसा हुआ कि सिर्फ खड़े होकर के निहारते रह गए और बॉल उनके सामने से चली गई। उम्मीद के मुताबिक शुरुआत तो नहीं है। हाँ, मॉलर की ज़रूर तारीफ करनी होगी, जैसे बढ़िया स्ट्रोक्स लगाए हैं उन्होंने। 2 ब्रेक पॉइंट उनको मिले और दोनों को अपने पक्ष में किया। प्रजनेश ने एक ब्रेक पॉइंट का फ़ायदा उठाया। तो फिलहाल 2-1 की बढ़त, अर्ली डेज इस मैच के, लेकिन उत्साह बढ़ाने वाली बात डेनमार्क के लिहाज से। Yes, no holds of serve yet. We've had 3 games and 3 breaks. But net, it's Smaller who's up a break now effectively, leading 2-1. Opening set of this dead rubber. Denmark already winning the tie 3-1 against India and retaining their place in Group 1, World Group, and India being relegated to World Group 2, where they will play their World Group 2 tie later this year. There's the star, Holger Rune, 19-year-old world number 9, and he's been the star of Denmark's victory over India in this Davis Cup tie, winning both his singles as well as his doubles match earlier today. He's made the big difference between these two teams. Unforced errors creeping into Mauler's game there. 2 easy points for Prajnesh. And once again, pressure on the server. Love 30.
That return from Prajnesh was mid-court, and no mistakes from Mala, dispatching it for a winner. One of the better rallies in this match, both the players playing attacking tennis. But it's 2 break points once again for India. Will we see the 4th consecutive break at the start of this match? Yes, it's a break back once again for Prajnesh. And so far it's been the story of breaks. 4 consecutive breaks. And as a result, it's 2-all in this opening set. Denmark already winning the tie 3-1. They've taken an unbeatable lead. And in this final rubber, it's Prajnesh Gunneswaran trying to reduce the margin of defeat for India. Both players preferring to stay at the baselines, slugging it out from there. Good serve down the middle. He's a tall man, Prajnesh Gunneswaran, 6 feet 4 inches, making use of his height, getting the power into his serve. Super down the line, ferociously hit from the baseline. Even Stevens, 2-all, 30-all. Amazing the power he generates on his ground strokes. Molla. Again, right on the baseline and hit with such power. Ball just whizzes past. Break point once again, this time in favor of Denmark.
Big serve, going out wide, Prajnesh. It's what advantage India. Opportunity for the first hold of this match. Just missing the baseline there, Prajnesh. It's deuce number 2. World ranking of 239 for Prajnesh. So the Indian ranked much higher than Mauler, who's 700 plus. What a shot, Mauler. Almost disdainfully just dispatching that ball for a winner. What great timing on that shot. And once again, the resultant power on the shot is amazing. Certainly the longest game in this match. He's not going to let go. He's going to make sure we have another break here. And it goes into deuce number 4. Great rally, and both the players quite solid from the baseline. Interesting thing is Mauler seems to generate more power on his backhand versus his forehand. Double-handed backhand that he really unleashes, whereas on the forehand he prefers the topspin and at a lower pace. There it is. He hits it much flatter on his backhand, Mauler. But Prajnesh finally manages to convert that advantage, hold serve, and we have the first service hold in this opening set as the Indian takes the lead. See that final point again. Trying to go for that flat backhand return, but this time going long, Mauler, allowing Prajnesh to hold serve. So Prajnesh playing in this dead rubber, which is always a tough proposition because the focus on the match is really over. With Denmark already taking a 3-1 lead, a winning lead against India, but nonetheless important for pride and to reduce the margin of defeat for India. Break points converted, 3 for Mauler, 2 for Prajnesh. In fact, correction there, 2 each. There have been 4 breaks overall, and
one hold of serve. So Prajnesh up 3-2. प्रजनेश गुणेश्वरन खासे अनुभवी खिलाड़ी भारत के, कई डेविस कप मुकाबलों का भी अनुभव। उनके सामने 19 वर्षीय युवा मॉलर, डेनमार्क के खिलाड़ी। डेनमार्क ने चूंकि अजय बढ़त हासिल कर ली है 3-1 की इस मुकाबले में, इसलिए कोच कप्तान फ्रेडरिक नेल्सन ने फैसला किया डेनमार्क के लिए कि वो एक ऐसे खिलाड़ी को मौका देंगे जो शायद अनुभव हासिल कर सकें, जीत हासिल कर सकें, सोने पर सुहागा। और यही कारण है कि मॉलर आज अपना डेविस कप करियर का ये मुकाबला खेल रहे हैं। बढ़िया डबल हैंडेड बैकहैंड का तो खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं मॉलर। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक खिलाड़ी की फोरहैंड पर कम ताकत आती है, लेकिन डबल हैंडेड बैकहैंड पर ज़्यादा। दोनों खिलाड़ी बेस लाइन पर ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, लंबी रैलीज। इस बार करतल ध्वनि से दर्शकों द्वारा अभिनंदन, धैर्यपूर्ण खेल का दोनों खिलाड़ियों को। अभी भी खासी संख्या में दर्शक मौजूद हैं, हालांकि टाई का फैसला हो चुका है डेनमार्क के पक्ष में। बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं प्रजनेश, आमतौर पर ज़्यादा अटैकिंग माने जाते हैं लेफ्ट हैंडर्स। इस बार इनसाइड आउट ट्राई किया था फोरहैंड पर बॉलर ने, लेकिन गलती हुई उनसे, साइड गैलरीज में गई बॉल। तो 3-2 की बढ़त है इस मैच में प्रजनेश गुणेश्वरन के पास भारत के पक्ष में, लेकिन सर्विस फिलहाल कर रहे हैं मॉलर 15-30 पर। बहुत ही बढ़िया ओपनिंग क्रिएट करते हैं मॉलर, और उसके बाद शॉट्स को एग्जीक्यूट भी उसी कुशलता के साथ करते हैं। ये उनके खेल की बड़ी खासियत है। 3-4 मौकों पर ऐसा हुआ है जब प्रजनेश गुणेश्वरन हिल भी नहीं पाए, सिर्फ निहारते रह गए बॉल को। और जैसे जैसे अनुभव मिलेगा बॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का, निश्चित तौर पर उनके खेल में और सुधार होगा। बेस लाइन से पीछे जाता हुआ रिटर्न प्रजनेश का, एक गेम पॉइंट डेनमार्क के पास, स्कोर बराबरी की ओर लाने की ओर अग्रसर डेनमार्क के मॉलर। दोनों ही खिलाड़ी परसेंटेज टेनिस का सहारा लेते हुए, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं, बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स को ऑप्ट नहीं करते, और गेम पॉइंट अपने कब्जे में किया मॉडर्न ने, और इसके साथ ही इस गेम को जीतने में कामयाबी। तो 4 सर्विस ब्रेक हमें देखने को मिले हैं, 2 मरतबा खिलाड़ियों ने सर्विस बरकरार रखी है अपनी, 3-3 की बराबरी। और पहले चारों गेम में सर्वर्स की सर्विस थी वो भंग हुई थी, ब्रेक हुई थी। 2 बार मॉलर और 2 बार प्रजनेश इसके शिकार बने। पहला सेट, 7वां सर्विस गेम। काफी पीछे, काफी डीप स्ट्रोक्स खेल रहे हैं मॉलर, और थोड़ा मजबूर कर रहे हैं प्रजनेश को कि बेस लाइन से काफ़ी पीछे जाएं। रिटर्न ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन 2-3 बार पीछे शॉट्स पे देखने को मिला कि प्रजनेश के जो रिटर्न है वो नेट में उलझ रहे हैं।
इसका पूरा फायदा लेने की कोशिश करेंगे मॉलर जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला। इस बार बैकहैंड ट्राई किया था, फ्लोइंग रिटर्न था बैकहैंड पर बॉलर का, लेकिन टेप से उलझ करके उनके ही पाले में। परिणाम स्वरूप अंक प्रजनेश के पक्ष में 30-15। अच्छी सर्विस थी इस बार, बैकहैंड पर स्ट्रेच करते हुए डीप सर्विस, रिटर्न कहीं भी दिशा में नहीं। 2 गेम पॉइंट प्रजनेश के पास, 40-15। ड्रॉप ट्राई किया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बेसलाइन के लगभग आसपास ही मंडरा रहे थे मॉलर, लेकिन कामयाब नहीं हुए उसमें प्रजनेश। और अच्छा नेगोशिएट किया 1-2 मौकों पर मॉलर ने, काफी डिफिकल्ट शॉट थे। 1 गेम पॉइंट अभी भी प्रजनेश के पास। बैकहैंड डाउन द लाइन, विनर लगाने की कोशिश प्रजनेश की, लेकिन असफल होते हुए उसमें ड्यूस पर पहुंचा मामला। 3 ऑल ड्यूस, पहला सेट, 7वां सर्विस गेम, 4 सर्विस ब्रेक्स। बैकहैंड स्लाइस का सहारा, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास बॉलर का, और उसमें थोड़ा रिस्क लिया था उन्होंने। उनको ऐसा लगा कि उनके पक्ष में ये पॉइंट आ गया है, लेकिन चेयर अंपायर का निर्णय कि प्रजनेश के पक्ष में थोड़ा सा लॉन्ग बेस लाइन से पीछे रिस्की शॉट था। अगर आ जाता तो वाहवाही। एडवांटेज भारत। बढ़िया, बहुत ही शानदार बैकहैंड पर ऐसा लगता है कि महारत हासिल की है बॉलर ने। इतनी खूबसूरत एग्जीक्यूशन है उनके, इतने युवा खिलाड़ी हैं। डबल हैंडेड बैकहैंड तो बिल्कुल ट्रेडमार्क है। 4 हैंड पर टॉप स्पिन का सहारा, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं, बहुत ज़्यादा रफ्तार नहीं, लेकिन जहां शायद एंटिसिपेट नहीं की जाती ताकत या रफ्तार, वहां पर उसका समावेश। इस बार निरुत्तर किया प्रजनेश ने उनको। तो दोनों खिलाड़ियों के बीच नेक एंड नेक बैटल, 1-1 अंक के लिए। और ये कहीं से भी इस बात का एहसास नहीं होने दे रहा कि ये टाई इट्स अ डेड रबर रादर। लेकिन गलतियां भी हो रही हैं खिलाड़ियों से। प्रजनेश के पास मौका था क्लोज करते इस गेम को, तो अनफोर्स एरर्स भी काफी। ड्यूस नंबर 3। बॉलर अपनी ओर से दिशा बदलने की कोशिश करते हैं, हालांकि ज़्यादातर समय दोनों खिलाड़ी बेस लाइन पर लंबी रैलियां खेलने के अभ्यस्त। प्रजनेश बैकहैंड स्लाइस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार वही ट्रेडमार्क डबल हैंडेड बैकहैंड क्रॉस कोर्ट का सहारा लिया और
भले ही बॉल उनके फोरहैंड पर थी प्रजनेश के, लेकिन आप देखें कितना खूबसूरत शॉट, एक कदम 1.5 कदम आगे बढ़ाकर थम गए और ब्रेक पॉइंट फेस करते हुए इस समय प्रजनेश गुन्नेश्वरन अपनी सर्विस पर। चार सर्विस ब्रेक हमें देखने को मिल चुके हैं इस पहले सेट में। डेविस कप टाई का ये अंतिम मुकाबला भारत और डेनमार्क की टीमों के दरमियान, और ये स्पेस क्रिएट किया अपने लिए बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन। एक और ब्रेक हासिल कर चुके हैं डेनमार्क के मॉलर। बहुत उत्साहित होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, खासतौर पर इस सर्विस गेम को जीतकर। काफ़ी स्ट्रगल उनको करना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने ये एक वेल डिजर्व ब्रेक हासिल किया। कि टीम के सभी खिलाड़ी खड़े होकर उनका अभिनंदन किया आखिरी अंक पर। नीलसन ने उनका विधिवत स्वागत किया डगआउट में। तो अच्छा उत्साह बढ़ाने वाला, मनोबल बढ़ाने वाला ये सर्विस गेम जीता है डेनमार्क के मॉलर ने। अपने आप को रिफ्रेश करके दोबारा से जब आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ संकल्प होगा। थोड़ा बहुत शायद अनफोर्स एरर से बचने का संकल्प उन्हें लेना होगा, और फ्रेडरिक नीलसन भी संभवतः इसी ओर इशारा कर रहे होंगे। लेकिन जोरदार टेनिस का प्रदर्शन, विशेष तौर पर युवा मॉलर के द्वारा। अच्छी उम्मीद गौरव कह सकते हैं भविष्य के लिए, अच्छी उम्मीद डेनमार्क के लिहाज से, और ये बहुत ही बढ़िया अनुभव उनको मिल रहा है इस मुकाबले में। Yes, invaluable experience to play on such a big stage in front of your home crowd. An hour back, both these players wouldn't have even expected that they would be on court. And then, of course, once Denmark had taken a winning 3-1 lead, both the captains decided to field them to give them the exposure. But it's turned out to be a ding-dong battle. Big ace from Muller, going out wide. The amazing thing about Muller is his double-handed backhand and the power he generates with that shot. Muller up a break of serve. 4-3, 30 love. Once again, going for that flat double-handed backhand. Doesn't miss an opportunity to try that shot, Muller. It's almost like he's defensive on the forehand. Dictating the rally there, Muller, but the unforced error in
enables Prajnesh to draw level now, 30 all. Good work by Prajnesh, good defense. He was on the run there, corner to corner. Great backhand once again. That's his pet shot, his real strength, Moller. This time on the volley. Gets nicely behind it and generates amazing power with that. Game point, Denmark. This time for a change, he tried to go flat on his forehand. Moller. Free-flowing tennis from both the players. That's 3 consecutive balls that Moller has hit long. Suddenly seems to have lost his range. That is always the risk with the flat shot. The ball tends to fly a lot more than with the topspin. Yes, well played, Prajnesh. He gets the break back of serve. And once again, we are level on serve here. 4 games apiece. And as many as 6 breaks of serve, 3 each. So effectively, there's only been 1 service hold by each player and 3 breaks. The net result, 4 all in the opening set. Prajnesh Gunneswaran of India, Elmer Moller of Denmark. And this is the 5th and final rubber. Denmark already taking a winning 3-1 lead over India. Good to see a large number of spectators have stayed back to encourage the players, even though the tie is decided. Once again, just long from Moller. Gets 2 game points for Prajnesh and for India.
That's long again. And Prajnesh holding his serve. I don't understand what's the point of arguing with the chair umpire. There is no system of referral or Hawkeye. There is no marks on the court. So it's just pointless to register your protest. The chair umpire's word is final. And in fact, Frederick Nielsen should be advising this young player not to lose his cool, to respect the chair umpire's decision and to get on with the game. Prajnesh, of course, much more experienced. The 32-year-old is showing a lot more composure and certainly has the advantage now. We are still on serve, of course, because Moller will come out to serve. But Prajnesh leads 5-4 in this opening set. Great service action from the tall Indian. And Moller, of course, going flatter with his shots, and as a result, a lot more unforced errors. Moller now serving to stay alive in the opening set. पूरा अवसर मॉलर के पास ओपनिंग क्रिएट करके अपने पक्ष में अंक बनाने में कामयाबी। यही अभी तक उनके खेल का हॉलमार्क रहा है, डबल हैंडेड बैकहैंड स्ट्रोक्स के अलावा। बहुत सी गलतियां भी हुई हैं दोनों ही खिलाड़ियों से, और ये उनमें से एक बहुत आसान पॉइंट उनको मिल सकता था, उसे गंवाया उन्होंने। चार 5 पर सर्विस कर रहे हैं। पहला सेट आखिरी मैच इस टाई का, 10वां सर्विस गेम, और अभी भी मुकाबला बराबरी पर जहां तक सर्विस गेम्स की बात है। इस बार अच्छा दिशा में परिवर्तन किया प्रजनेश ने, बढ़िया फ्लोइंग फोरहैंड का सहारा लिया उन्होंने। परिणाम स्वरूप एक रिजर्विंग पॉइंट उनके पक्ष में। डबल हैंडेड बैकहैंड क्रॉस कोर्ट आया था, क्रॉस कोर्ट से जवाब दिया। डाउन द लाइन पासिंग शॉट की कोशिश की थी बैकहैंड पर प्रजनेश के, फुल स्ट्रेच किया था फोरहैंड पर प्रजनेश ने। दोनों ही खिलाड़ी बेस लाइन पर एक दूसरे का इम्तिहान लेते हुए नजर आए हैं बहुत बार, और यहाँ 15-40 यानी 2 गेम और सेट पॉइंट प्रजनेश गुन्नेश्वरन के पास हैं। देखना होगा कि इसका वो फायदा उठा पाते हैं अथवा नहीं। काफी अनफोर्स एरर्स हुई हैं मॉलर से। प्रजनेश ने एक ब्रेक पॉइंट गंवाया है। उन्होंने देखा था कि चार्ज कर रहे थे, नेट पर आ रहे थे मॉलर, और लॉब खेलने की कोशिश की उन्होंने। बैकहैंड से लॉब खेलना वैसे भी उतना आसान नहीं होता। डेनमार्क के डगआउट में खुशी का माहौल है क्योंकि टीम ये टाई जीत चुकी है। 3-1 की अजय बढ़त है उनके पास, और अगर भारतीय टीम ये मैच जीतती भी है तो स्कोर 3-2 ही होगा डेनमार्क के पक्ष में। ओ, ये उन्होंने इनसाइड आउट ट्राई किया था। पूरा ओपनिंग थी, पूरा कोर्ट खाली था, लेकिन यहाँ पर ये ब्रेक पॉइंट गंवाया है
मॉलर ने, और इसके साथ ही ये सेट भी गंवा दिया है उन्होंने। तो एक अनफोर्स्ड एरर पर ये सेट लूज़ किया। हालांकि कप्तान नीलसन और टीम के बाकी खिलाड़ी उनका उत्साहवर्धन करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए, युवा खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है ये। बढ़िया ओपनिंग क्रिएट की थी उन्होंने और फॉर एंड इनसाइड आउट पर अंक बनाने का प्रयास किया था, लेकिन साइड गैलरीज में गई गेंद। निराश जरूर हैं। प्रजनेश बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं मॉलर की तुलना में, और सच तो यही है कि जब ये मैच गौरव शुरू होने वाला था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद प्रजनेश इसे आसानी से जीतने में कामयाब होंगे, लेकिन ओवरऑल जो पहले सेट में खेल देखने को मिला है उसमें यही लगता है कि जो ग्राउंड स्ट्रोक्स हैं और जो बल्कि रिपर्टोयर ऑफ स्ट्रोक्स जो है वो मॉलर के खाते में बड़े शानदार और बड़े दमदार हैं, और बैकहैंड पर स्ट्रगल करते हुए से नज़र आते हैं प्रजनेश, और उसके ठीक विपरीत एंजॉय करते हैं वैसे स्ट्रोक्स को खेलना मॉलर। Yes, indeed, Prajnesh is ranked almost 500 places higher than his opponent, 239 versus 700 plus. As we see the stats, 47 minutes first set. And you can see 100% second serves for Prajnesh, very consistent on his serves. And a lot more unforced errors also from Moller. While he might have had more winners, but a lot more unforced errors in the process. And the remarkable stat, of course, in that set was as many as 7 breaks of serve in the 10 games that we saw. 6-4 was the final score in favor of Prajnesh. And Prajnesh had 4 breaks in his favor and Moller 3. Moller was not ready there. So that's an amazing stat, and at this level of tennis, it's quite rare to see that number of breaks. Of course, a lot of games went to deuce, so the outcome can go either way. But it's still a very high number, a very high percentage of breaks. Let's see if that pattern changes in this second set. Good consistent serving from Prajnesh. He doesn't go all out on the speed of the serve, but focuses on the direction and the angle and getting the serve in. There's that flat backhand. Once again, Moller just relishes that shot and really unleashes it with a lot of fury. Good hold of serve from Prajnesh. And he takes a 1-0 lead in the second set, having won the first set 6-4. Some words of advice from Fredrik Nielsen, the Danish captain, to the youngster, Moller. Moller certainly has all the shots in the book, a lot of power as well, a lot of raw talent, but just needs to temper his shots, play a little more percentage. And certainly, Prajnesh, the more consistent of the two, relentlessly keeps the ball in play from the baseline, wears his opponent down.
Good serve from Mola. Powerful serve going out wide to Prajnesh. Big hitting once again from Mola. And finishes the point with a very deft drop volley after those two powerful shots. There's that drop volley hit with a lot of finesse. Big serve again down the middle. So certainly both these players seem intent to change that trend of lots of breaks in the opening set. Still a game point in favor of Denmark. Double fault from Mola, and that allows Prajnesh to claw back in this game and bring it to deuce. An ace from Mola. Goes out wide and no chance at all for Prajnesh to get to that ball. Big serve again, and Mola holds serve after a few niggles, but finally manages just to hold serve. And we have two holds of serve at the start of the second set. It's one game all. तो विपरीत अंदाज में आगे बढ़ता हुआ यह मुकाबला पहले सेट से अगर कंपेयर करें तो पहले सेट को याद करें तो जहां पर एक बाद एक सर्विस ब्रेक हमें देखने को मिले थे और यहां दोनों खिलाड़ियों ने परिवर्तन के तौर पर अपनी अपनी सर्विस होल्ड की है। हालांकि थोड़े एंग्शियस मोमेंट्स आए हैं दोनों के ही लिए। अच्छी शुरुआत इस तीसरे सर्विस गेम में। थोड़े हताश से नजर आए थे प्रजनेश पिछली मर्तबा जब पॉइंट 2 लगातार लूज किए थे उन्होंने। रिटर्न लंबा होता हुआ बेसलाइन से पीछे मॉलर का। तो एक लगातार ये एक सिलसिला सा रहा है दोनों खिलाड़ियों के खेल में और इनकंसिस्टेंसी उसे ज़्यादा कहा जाता है। हालांकि रजनीश के पास जितना अनुभव है, आप देखें किस तरीके का इनसाइड आउट उन्होंने ट्राई किया है। शायद अपोनेंट को थोड़ा चकित करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनका जो फ्रंट कोर्ट था सामने का वो पूरा खाली था। उसके बावजूद इनसाइड आउट की कोशिश गलती हुई उनसे। इस बार साइड गैलरीज में जाता हुआ रिटर्न।
प्रजनेश के पास सर 2 गेम पॉइंट, अपने अपोनेंट की गलतियों का फायदा लेकर गेम अपने नाम करें। एक बार फिर से बैकहैंड पर गलती करते हुए मॉलर, और एक तरीके से उन्होंने उपहार में दे दिया ये गेम। तो परिवर्तन के तौर पर रैलीज कम दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक जो खेल हुआ है। और बहुत अच्छी बात यह है डेनमार्क के लिहाज से कि जो भी उनका पूरी टीम है वो जब भी आ रहे हैं मॉलर डग आउट में, जब भी आ रहे हैं तो उनका स्वागत कर रहे हैं, खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इस बात को भांपते हुए कि बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, 19 साल के हैं, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है डेविस कप मुकाबलों का, गलतियां हो रही हैं उनसे, लेकिन उसके बावजूद उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। ये एक बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है। वहीं दूसरी ओर रोहित राजपाल, भारतीय टीम के 11 खिलाड़ी कप्तान, टिप्स जरूर दे रहे हैं, लेकिन प्रजनेश के पास वर्षों का अनुभव है, क्रम में वो ऊंचे हैं मॉलर की तुलना में। ग्राउंड स्ट्रोक्स ज़्यादा इम्प्रेसिव लगते हैं मॉलर के। उम्र भी उनके साथ है, अनुभव ज़रूर अभी नहीं, लेकिन जैसे जैसे सर्किट में आगे खेलेंगे अनुभव उनके पास आएगा। और शायद सब्जेक्ट टू इंजरीज अगर यही इम्प्रूवमेंट रहता है तो निश्चित तौर पर 3-4 साल के बाद हमें एक डिफरेंट मॉलर एटीपी सर्किट पर देखने को मिलेंगे। भारत और डेनमार्क की डेविस कप टीमों के बीच वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ टाई ग्रुप 1 का ये मुकाबला, जो 3-1 की अजय बढ़त हासिल की डेनमार्क ने। और ये है वो एरेटिक शॉट्स, ये इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जिसका खामियाजा कई मरतबा इस मैच में भुगतना पड़ा है बॉलर को, जहां वो पूरी ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं और वहीं पर विनर लगाने में कामयाब नहीं हो रहे, बल्कि अपोनेंट को पॉइंट गिफ्ट कर दे रहे हैं। तो ज़रूर सुधार करने की गुंजाइश है। 0-30 पर फिलहाल सर्विस करते हुए प्रजनेश ने बढ़िया इनसाइड आउट ट्राई किया था, लेकिन बहुत अच्छा जवाब दिया था मॉलर ने। बढ़िया लंबी रैली दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन मॉलर के द्वारा। डबल एंडेड बैकहैंड क्रॉस कोर्ट ट्राई किया और बैकहैंड पर ही एंटिसिपेट कर रहे थे प्रजनेश, लेकिन उसे फोरहैंड पर बल्कि एंटिसिपेट कर रहे थे प्रजनेश, उनके बैकहैंड पर रखा। देखें किस तरीके से फोरहैंड से जवाब दिया क्रॉस कोर्ट से, और ये डाउन द लाइन विनर। तो जैसा पहले भी कई बार हुआ है, प्रजनेश सिर्फ निहारते रह गए और ये बढ़िया वापसी उनके द्वारा एक एस लगाया। 0-3 से पिछड़ रहे थे, अब 30 ऑल। ऑन सर्व है मामला अब तक दूसरे सेट में। कोशिश की थी इस बार फोरहैंड पर निकालने की, असफल रहे मॉलर। 30-40 यानी एक ब्रेक पॉइंट फेस कर रहे हैं। हालांकि तालियां लगातार बजाते हुए दर्शक उनकी हौसला अफजाई करते हुए। बढ़िया सर्विस, डीप सर्विस थी, अच्छी वापसी उनके द्वारा, ब्रेक पॉइंट बचाने में कामयाब। ड्यूस अपने आप से खुश नहीं है बहुत प्रजनेश गुन्नेश्वरन।
कमोवेश ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हुए, विविधता लाने की कोशिश करते हुए मॉलर इस बार बेस लाइन से पीछे गया। उनका रिटर्न तो एडवांटेज भारत के पक्ष में। रजनीश के सामने सुनहरा मौका है, ये दूसरा ब्रेक पॉइंट है उनके पास इस सर्विस गेम में। अगर इसको घुमा सके, अपने पक्ष में कर सके तो बढ़त हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा स्कोर बराबरी की ओर अग्रसर होगा। एक बार फिर से बैकहैंड धोखा देता हुआ प्रजनेश को अपोनेंट के बैकहैंड पर ट्राई कर रहे थे, असफल रहे। एक और ड्यूस। तो दोनों ही खिलाड़ी, गलतियां भी हो रही हैं, अच्छे स्ट्रोक्स भी लग रहे हैं और जाहिर सी बात है कि एक भी इंच जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। नेट पर आ गए हैं मॉलर, अच्छी कोशिश उनके द्वारा, लेकिन ये एक बार फिर से एक अनफोर्स एरर और तीसरा ब्रेक पॉइंट फेस करते हुए इस सर्विस गेम में। पूरा ओपनिंग क्रिएट किया था अपने लिए और फोरहैंड पर पकड़ा था रजनीश को। बैकहैंड को फोरहैंड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी है रजनीश की और उसी क्रम में शायद फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड की शायद कोई बार देर होती है। एक बार फिर से मामला ड्यूस पर। अच्छा ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी रजनीश ने, स्ट्रेच किया था फोरहैंड पर मॉलर को, लेकिन अच्छा जवाब दिया उन्होंने। और पहली सर्विस का जो कन्वर्जन रेट है थोड़ा सा डिप कर रहा है मॉलर के केस में। शॉट खेला है, डबल हैंडेड बैकहैंड में तो महारत हासिल है। पहले क्रॉस कोर्ट, उसके बाद डाउन द लाइन विनर और अब परिवर्तन के तौर पर एडवांटेज डेनमार्क के पक्ष में। जहां कमजोर रिटर्न आता है और जहां अवसर मिलता है वहां पर पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। रजनीश टॉप स्पिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकत उनके शॉट्स में, रफ्तार उतनी ज़्यादा नहीं। क्या बढ़िया शॉट खेला है, बैकहैंड डाउन द लाइन विनर, निरुत्तर किया बिल्कुल रजनीश को मॉलर ने। और तमाम फैंस वो यकीनन इस मुकाबले की समाप्ति तक बना चुके होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बहुत ही बढ़िया टेनिस का प्रदर्शन करते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी सर्विस भंग होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी सर्विस बरकरार रखी है। एक सेट से पिछड़ जरूर रहे हैं लेकिन फिलहाल बराबरी पर। Yes, exciting tennis from both these players. Big hitting, particularly from Moller on that backhand of his. Doesn't miss an opportunity on his backhand. Good deep return from Moller. Created problems for the server, Prajnesh.
This time, a blistering return. No chance for Prajnesh. Jumping on to 3 break points, smaller. Good serve from Prajnesh. An ace going out wide. Still 2 break points. Great returning from Mola in that game. Enables him to get the break of serve against Prajnesh and take a 3-2 lead in the second set, having lost the first set. Exciting prospect for Denmark. Mola, just 19 years old. And this is invaluable exposure, which is why Captain Nielsen electing to field him in this dead rubber. Break points converted, 6 for Mola, 8 for Gunneswaran. Many of those coming in the first set. 4 break points won for Mola, 3 for Gunneswaran. So pretty much even Stevens in terms of overall match stats. First set, of course, going to Prajnesh, 6-4. But it is Mola who's up a break of serve and leading 3-2 in the second set. Good anticipation there from Prajnesh, certainly moving the right way. But there was too much power, too much depth on that shot from Mola. Almost a wild shot there from Prajnesh. He's been so consistent right through this match so far. Consolidating his lead
Møller. Elmer Møller of Denmark, having lost the first set 4-6, up 4-2 in the second set against Prajnesh Gunneswaran of India. This, of course, a dead rubber, with Denmark already having taken a 3-1, an unbeatable lead over India. Serving with new balls, Prajnesh. This time a great forehand down the line. Møller has certainly upped his game in this second set. Good first serve this time from Prajnesh, creates that opening. Super down the line from Prajnesh. That approach from Møller was just not deep enough. And the ball sat up nicely for Prajnesh to dispatch that winner. Good hold of serve from Prajnesh. He stays within breathing distance of his opponent and trails 3-4 in the second set, having won the first set 6-4. Importantly, it is Elmer Møller of Denmark up a break of serve in this second set. Some words of advice from Captain Fredrik Nielsen. Must be satisfied overall with Denmark having already won this tie, taken a 3-1 lead against India, winning both the earlier matches today, thanks to that man who was just on the screen, Rune, the world number 9, who spearheaded Denmark's charge against India, winning both his singles and also his doubles match earlier today. As we come to the business end of the second set, Møller serving 4-3. Good rally. Once again, both the players engaging
in that baseline duel. Mahler has certainly been much more consistent in this second set. Fewer unforced errors. Once again, very strong on his ground strokes on both the flanks. Elmer Mahler. And the double fault from Mahler enables Prajnesh to draw level now 30 all. Opportunity here for the Indian to get that crucial break back of serve. Easy put away from Mahler. Shows the right moment to come up to the net. Game point, Denmark. Prajnesh now serving to stay alive in this second set. Big one down the middle from Prajnesh. Jumps down to a 30-love lead. Three game points for India. And for Prajnesh, big one to wrap up that game. Quick service game for Prajnesh at love. So he stays within breathing distance, within touching distance of his opponent. And when they come back from that break, it's going to be Mahler who will serve for the second set. एक ब्रेक का एडवांटेज डेनमार्क के मॉलर के पास, युवा खिलाड़ी, भविष्य की उम्मीद, और अभी तक उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इस बात के बावजूद कि पहला सेट हारे, लेकिन दूसरे सेट में ज़्यादा बेहतर खेल का प्रदर्शन, कई बार थोड़ी गलतियां ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है फ्रेडरिक निल्सन असंतुष्ट तो नहीं होंगे अपने इस युवा खिलाड़ी से।
और वहीं प्रजनेश गुन्नेश्वरन, वर्षों का अनुभव उनके पास, विश्व वरीयता क्रम में भी ऊंचे, बहुत ज़्यादा पहली सर्विस के हिसाब से चूज़ करने के लिए नहीं दोनों खिलाड़ियों के बीच। फर्स्ट सर्व का परसेंटेज जीतने के हिसाब से प्रजनेश गुन्नेश्वरन के पक्ष में, लेकिन दूसरे सेट में एक बढ़त है फिलहाल मॉलर के पास और वो चाहेंगे कि उसको बरकरार रखें, कैपिटलाइज करें एक ब्रेक का एडवांटेज, सेट जीतकर एक की बराबरी दिलाए डेनमार्क को, उसी दिशा में अग्रसर होते हुए। इनसाइड आउट का सहारा लेते हुए प्रजनेश्वरन ओपन किया था, रिटर्न आया जरूर लेकिन साइड गैलरीज में। फिफ्टीन ऑल। डेनमार्क के लिहाज से बात करें 4-6, 5-4, 15 ऑल। वैसे इस मुकाबले में डेनमार्क ने 3-1 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। आज के दोनों जो शुरुआती मुकाबले थे, पहले डबल्स और उसके बाद रिवर्स सिंगल्स, ये डेड रबर, लेकिन उसके बावजूद दोनों जो खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर मौजूद हैं उनके लिहाज से ये मैच खासा महत्वपूर्ण, इंडिविजुअल रिकॉर्ड के हिसाब से, माइलस्टोन्स के हिसाब से, और जाहिर सी बात है कि दोनों खिलाड़ी अपने देश के लिए खेल रहे हैं। तो डेविस कप के रिकॉर्ड की जब बात होती है तो ये जिक्र ज़रूर होता है कि डेनमार्क के खिलाफ मुकाबला जीता या डेनमार्क के खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ मुकाबला जीता। और युवा खिलाड़ी मॉलर ने अच्छा प्रॉमिस दिखाया है। रिपोजिटरी ऑफ स्ट्रोक्स उनका खासा आकर्षक। इस बार बैकहैंड लंबा होता हुआ तो ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ सेट को जीतने में कामयाब होंगे। अब 2 ब्रेक पॉइंट फेस करते हुए मॉलर 15-40 पर। हालांकि दर्शक, खास बात यह है कि मैदान पर जो कोर्ट में मौजूद हैं लगातार उनका उत्साहवर्धन करते नजर आए हैं। बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है खेल के लिहाज से या किसी युवा खिलाड़ी को उत्साहित करने के लिहाज से। इस बार बढ़िया चार्ज किया नेट पर, कमज़ोर सा रिटर्न आया था मॉलर का और ये ब्रेक हासिल करने में कामयाबी प्रजनेश गुन्नेश्वरन को। बमुश्किल तमाम रिटर्न किया था ये मॉलर ने और नेट पर आकर क्रॉस कोर्ट, डबल हैंडेड बैकहैंड क्रॉस कोर्ट के सहारे ब्रेक पॉइंट अपने पक्ष में किया। प्रजनेश ने बराबरी हासिल कर ली है। बहुत ही बढ़िया डीप सर्विस, एंगुलर सर्विस। हालांकि बैकहैंड पर थी जो स्ट्रॉन्ग एरिया है मॉलर का, लेकिन उस पर जवाब उनका सही दिशा में नहीं आया। साइड गैलरी में पहुंचा रिटर्न। तो पहली सर्विस जब सही जगह पर नहीं जाती तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी का प्रयास होता है कि किसी तरीके से बॉक्स में सर्विस को डाला जाए। उसी क्रम में दिशा बहुत महत्वपूर्ण, साथ ही रफ्तार भी कम होना थोड़ा लाजमी। इस बार स्लाइस, बैकहैंड स्लाइस की कोशिश की थी, थोड़ा
डबल माइंडेड से रहे ऐसा लगा प्रजनेश कि या तो बैकहैंड क्रॉस कोर्ट खेलना चाहते थे या डाउन द लाइन ड्रॉप खेलना चाहते थे। उसी क्रम में अंक गंवाया उन्होंने। बैकहैंड पर तो कोई मुश्किल नहीं है मॉलर को, बल्कि बैकहैंड पर काफी घातक नजर आते हैं उनके शॉट्स। उनको नेगोशिएट करना मुश्किल होता है। इस बार भी वैसी ही स्थिति बन रही थी। एक और अनफोर्स्ड एरर और अब 2 गेम पॉइंट प्रजनेश गुन्नेश्वरन के पास। देखिए कितना ऐसा लगा कि बिल्कुल कोर्ट खाली था सामने, इनसाइड आउट के द्वारा पॉइंट लेना चाहते थे। तो परिस्थितियां कैसे बदलती हैं खेल के मैदान पर, उसका नमूना इस टाई में और इस मैच में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। पहले सेट में ताबड़तोड़ सर्विस ब्रेक्स हमें देखने को मिले और ये ऐसा मौका जहां शायद कोई भी खिलाड़ी डबल फॉल्ट नहीं करना चाहेगा, लेकिन वैसा हो चुका है। प्रजनेश गुन्नेश्वरन ने एक डबल फॉल्ट किया है। 2 गेम पॉइंट थे उनके पास, 6-5 की बढ़त लेने का अच्छा अवसर। 1 गेम पॉइंट गंवाया है। लगातार एरेटिक नजर आ रहे हैं। रॉन्ग कोर्ट में सर्विस गिरती हुई उनकी। ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश, लेकिन कामयाब होते हुए यहाँ पर मॉलर, और बिल्कुल निराश से हो गए अंत में प्रजनेश। गेंद को सिर्फ निहारा उन्होंने जाते हुए अपने से दूर। डबल हैंडेड बैकहैंड, बिल्कुल जोरदार हथियार। एडवांटेज भारत के पक्ष में। सीसॉ बैटल है इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। वरीयता क्रम में भले ही अंतर हो, उम्र में अंतर हो, खेल में लेकिन चयन कर पाना दोनों में से थोड़ा मुश्किल। अभी रिटर्न कर ही दिया था, लेकिन बमुश्किल तमाम अपने पक्ष में उसे करने में कामयाब हुए प्रजनेश गुन्नेश्वरन। कहां पिछड़ रहे थे, लेकिन फिलहाल 6-5 की बढ़त हासिल कर ली है। हालांकि अभी सर्विस का दारोमदार मॉलर के पास होगा। कप्तान निल्सन बिल्कुल भी उनसे असंतुष्ट नहीं होंगे, जरूर कुछ ना कुछ गुरु मंत्र तो देंगे ही। So great comeback by Prajnesh, who was staring at defeat in the second set, trailing 4-5, but he's won 2 games in a row to turn the tables and put the pressure back on the young Dane, Elmer Moller. Lots of attractive winners, but interspersed with many unforced errors. That kind of sums up Moller's game today, whereas Prajnesh has been a lot more consistent, a lot more percentage tennis from the Indian, and so far it seems to be providing him the edge. So Moller now to serve to stay alive in the set and in this match. Disdainfully dispatched on that double-handed backhand. That's a strong weapon, and certainly one of the best execution and the most power we have seen of anyone to hit that shot. Two quick points for Moller.
jumping onto 3 game points and seems to be all set to take this into a tie break. It'll be the first tie break in this tie, this Davis Cup tie, India versus Denmark. None of the matches so far have gone into a tie break. Yes, indeed. Moller holds serve to make it 6-all, and we will have a tie break now to decide this second set. Even Stevens, it's been a close second set. And it'll come down now to a test of nerves in the tie break. Remember, it's the first to 7 points, or a lead of 2 in case it is 6-all. Let's see if Moller tries to temper down his game here, play more percentage tennis, or does he continue to go for his big shots? There's the first mini break of serve. Prajnesh 2-0 up. Body language wise, clearly Prajnesh the more calm, the more composed of the two. That's wide. So 3 points in a row. Good start for Prajnesh in this tie break. And once again, that slightly worried look from Nielsen. Of course, must be very happy overall that the tie has gone in Denmark's favor. Smart play this time from Moller, keeping the ball more in play, stretching the rally. Just long, the return from Moller. So it's clearly advantage for Prajnesh in this tie break to decide the second set, 4-1 up. Serves, of course, will move back to Moller, who will have 2 serves. That's long again. So another mini break of serve, and now definitely Prajnesh looks to be in the driver's seat. 5-1 up. They will switch ends after 6 points in the tie break. But Prajnesh looks to be in a commanding position here. 5-1 up in the tie break, having won the first set 6-4. And seems to be on the brink
of making it a more respectable score in this Davis Cup tie against Denmark for India. So 1-6 it is, and that's 5 match points now for Prajnesh. Great opportunity to make it 3-2 in this tie against Denmark. He's certainly shown his experience, has been calm, composed, much more consistent right through. And that sums up the match. It is the experience and consistency of Prajnesh who wins this dead rubber against Denmark, defeating Elmer Moller in straight sets, 6-4, 7-6. So, great deal of pride in that win for Prajnesh, even though it was a dead rubber. And this tie finishes overall 3-2 in favor of Denmark. But the Indians can certainly go with their heads held high. They've certainly played well, particularly in the previous match when Sumit Nagal gave it all against Rune, the world number 9. But the conclusion of this tie, it is 3-2 in favor of Denmark, who will continue to be in Group 1. India will be relegated to the World Group 2. Et sidste spørgsmål, hvordan kan du tage med fra den her kamp? Der er en del ting, jeg vil træne på efter den her kamp. Det synes der er en del ting at tage med, men jeg i hvert fald gå mere på de vigtige tidspunkter og tro mere potentiale. तो एक बार फिर से आपको बताते हुए कि डेनमार्क ने भारत को डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप प्लेऑफ टाई में 3-2 से हरा दिया है। मैं शिवेंद्र चतुर्वेदी अपने साथी कमेंटेटर गौरव सेठ के साथ आपको दूरदर्शन के स्टूडियोज वापस लिए चलता हूं। नमस्कार।